and I'm grateful that he's here. He arrived this morning from the United States, and he's leaving tomorrow evening back to the United States. But it is his greatness that he agreed to come to our event, uh, and because he believes in liberal democracy, and he knows that that is what we aspire to have in this country. And thank you, Dr. Rajan, for being here. तो जब हमने प्रोफेशनल्स कांग्रेस को शुरू किया, अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है? We want some element of professionalism in politics. तो अगर आप एक ऐसा सोचेंगे ये पॉलिसी मेकर हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और वहाँ पे रघुराम राजन जी हैं, ये एक एडवाइजर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो मे बी दैट इज हाउ वी शुड यूज दिस सेशन. तो मैं शुरुआत इससे करूँगा कि बघेल जी से हम पूछेंगे कुछ कि छत्तीसगढ़ में जब ये चीफ मिनिस्टर बने इनका क्या विजन था, और उस विजन में क्या मेन एलिमेंट्स थे, और आपको थोड़ा फॉर 4-5 मिनट्स आप बोलेंगे कि क्या इनकी जो आपके यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे, इंक्लूडिंग राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो जो ये इनिशिएटिव्स हैं आपके मेन इनिशिएटिव्स क्या हैं, वो आपने क्यों शुरू किए और उनका क्या नतीजा निकल रहा है. उसके बाद हम डॉक्टर राजन के पास जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, उनसे सीखेंगे कि क्या है उनकी राय इस बारे में. देखिए, छत्तीसगढ़, सबको नमस्कार. खासकर रघु राजन साहब यूएस आए हैं और सीधा यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ, और सभी साथियों का, शशि थरूर जी का और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों का मैं स्वागत करता हूँ. छत्तीसगढ़ बने 22 साल हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत पुराना नहीं छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में बात करना चाहूँगा. छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ प्रदेश, जनसंख्या भी 2,85,00,000, करीब 75 से 80% लोग कृषि पे आधारित हैं. 44% भूभाग है वो हमारे जंगल है, और 32% ट्राइबल है. यहाँ 2 प्रकार की वर्षा होती है, एक तो आपके बॉम्बे से जो मानसून आता है वो भी होता है, बंगाल की खाड़ी से आता है. तो बरसात के दिनों में हम कोई दूसरी फसल नहीं ले सकते. सिंचाई का रकबा भी दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ कम है, 30% के आसपास रकबा सिंचित है. ऐसे में यहाँ के जो किसान हैं वो एक फसल पर ही निर्भर है. यदि पानी एक बार साल, चौथे साल में एक बार सूखा जरूर पड़ जाता है छत्तीसगढ़, और ऐसे में किसान को संभलने में 2 साल संभलता है और तीसरे साल फिर तीसरे चौथे साल अकाल हो जाता है. तो फिर जहाँ है वहीं. तो ये स्थिति है. दूसरी स्थिति ये है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं. 37% बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहे हैं. ये 2018 के पहले के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ. 41% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं, खून की कमी होती शरीर में. तो ऐसा हमारा प्रदेश है, और नक्सल प्रभावित भी रहा है. तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने, दूसरा हमारा प्लस ये है कि 40 से 50% तक की वर्षा होती है. दूसरा, जमीन हमारे पास पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है. यदि आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत आदर्श स्थिति है. जितने भौगोलिक स्थिति है और जो जनसंख्या है वो बहुत आदर्श स्थिति है. उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड नहीं है. अब बात आती है कि हमारा फायदा क्या है, हमारे पास ताकत क्या है. तो जमीन तो है ही ताकत, पानी भी पर्याप्त है, जंगल भी संभाल. सोना है,
यूरेनियम है, तो सब प्रकार के हमारे पास खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में। खनिज संसाधन का उपयोग आप देखेंगे आज़ादी के पहले भी होता रहा और आज़ादी के बाद नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट बना के इसकी शुरुआत की। पावर प्लांट यहाँ मध्य प्रदेश में से बिजली उत्पादन यहाँ से होता था, बिजली खपत वहाँ। तो ये स्थिति हमारे प्रदेश की है, लेकिन उसके बाद भी गरीबी बहुत। अभी जो भारत सरकार ने एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बनाया, आकांक्षी जिला, 100 जिले हैं पूरे देश में, उसमें 10 जिला हमारे छत्तीसगढ़। और वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा खदान है दंतेवाड़ा, उसमें भी वो आकांक्षी जिले में आता है। कोरबा जहां सबसे ज्यादा पावर उत्पादन होता है वो भी आकांक्षी जिला में। तो ये जो संपत्ति का असमान वितरण के कारण से हमारे यहाँ गरीबी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 2018 का जब चुनाव हुआ उस समय राहुल जी यहाँ आए थे और उन्होंने घोषणा की कि हम ऋण माफी करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में केवल धान का फसल होता है, इसका 2500 रुपये जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो 1.5 गुना होना चाहिए उत्पादन लागत से, 1.5 गुना उसका कीमत होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने लोगों ने उस समय करीब 1700 था, तो उस समय हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की। यहाँ की जनता ने हम पे विश्वास किया और 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। अब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये बात सही है कि ऋण माफी किए और 25 रुपया क्विंटल में धान जब खरीदी के सरकार पे दबाव, अर्थव्यवस्था काफी दबाव पड़ा, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से हम लोगों ने कहा कि हम जब कमिटमेंट किए उसको करेंगे और दूसरे जो वित्तीय जो अनुशासन है उसे बना कर रखेंगे। तो वो काम भी हमने किया। तो हमने फिर 2500 रुपये में भारत सरकार ने रोक लगा दी कि आप 25 समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा देंगे तो आपके चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमारे सामने दूसरी संकट, एक तरफ किसानों से हमने कहा था कि हम कब 2500 रुपये देंगे, दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि आप 1 रुपये भी ज्यादा दोगे तो आपका चावल हम FCI में जमा नहीं करेंगे। और 1-2 साल ऐसा हुआ भी कि हमको बाजार में नीलाम करना पड़ा और हमको सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी हम अपने कमिटमेंट में बने डटे हुए थे। इससे ₹300 और खरीदी की व्यवस्था की। एक तरफ ये हो गया कृषि से जुड़ी हुई चीजें, जिसमें जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो गया है, संपन्न होते जा रहा है हमारे किसान। एक तो उऋण हो गया और दूसरा उसके पास पैसा पर्याप्त आ गया। उससे हुआ ये कि जो गांव से पलायन होकर शहरों में जो लोग आते थे वो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, शहर से अब गांव की तरफ जाने लगे लोग। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2017 में 15 लाख किसान हमारी सोसाइटी में धान बेचने के रजिस्टर्ड थे, अब वो बढ़ के 23 लाख हो गया। और जो धान का रकबा था 22 लाख हेक्टेयर बढ़ के हो गया 30 लाख हेक्टेयर। जो धान बिक्री है वो 60 से 70 लाख मीट्रिक टन से कभी अधिक नहीं गए थे। हम पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए और अभी ये सीजन में हमने जो टारगेट किया है, लक्ष्य बनाया है, वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो उत्पादन भी बढ़ा, रकबा भी बढ़ा, कृषकों की संख्या बढ़ी, लोगों के रिवर्स माइग्रेशन हुआ। दूसरी तरफ ये है कि जो लघु अनुपज है, 44% हमारे जंगल है, तो हमारे पास सब प्रकार के लघु अनुपज। तो पहले केवल 7 प्रकार की खरीदी करते थे, हमने 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य घोषित किया। झाड़ू से लेकर महुआ, चार, चिरौंजी, काजू, इमली, तिखुर, सब प्रकार
पास आने लगा। और उसके साथ साथ केवल उसको खरीदी भर नहीं किए, बल्कि उसको वैल्यू एडिशन किए। मान लो महुआ है, तो महुआ से केवल शराब भर नहीं बनती, महुआ के हमने लड्डू बनाया, मध्याह्न भोजन में भी दिया, उसके शरबत भी बनवाई। इमली है, इमली ऐसी बेच देते थे, तो उसको फोड़ने की व्यवस्था की, उसकी पेस्ट बनाने का शुरुआत कर रहे हैं, उसकी कैंडी बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ तिकुर होता है, तिकुर पहले ऐसे ही बेच देते थे, काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे, अब उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, अब वो 1900 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने से लोगों को रोजगार मिला और ज्यादा कीमत भी मिला। तो ये लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था। और तीसरा, गोधन न्याय योजना हमने शुरू की, जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी। आज पूरे देश में गाय एक समस्या बन गई, मवेशी एक समस्या है कि खुले में जानवर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, फसल की बर्बादी भी। तो हमने फैसला किया कि हर गांव में गौठान बनाएंगे। 11,000 हमारी पंचायतें हैं, तो करीब 10,000 पंचायतों हमने गौठान स्वीकृत किया, जिसमें 5 से 10 एकड़ जमीन हमने आरक्षित की और उसमें गौठान बनाए। गौठान में मवेशियों के डे केयर के रूप में रखा, उसे चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और उसके साथ गोबर खरीदी। 2 रुपये किलो में गोबर। दुधारू गाय देती है, दूध देती है, तो इसलिए सब लोग रखते हैं, लेकिन जो जानवर दूध नहीं देती है उसको हकाल देते हैं, वही आवारा पशु के रूप में सामने आता है। तो गोबर तो सभी को देना है, चाहे दूध दे या ना दे, लेकिन गोबर तो सभी को देना है। और जब गोबर की कीमत मिलेगा 2 रुपये किलो, तो फिर उसे चारा भी खिलाएंगे, तो जानवर के देखभाल भी करेंगे, बिठा कर रखना पड़ेगा। तो रोड एक्सीडेंट भी कमी आई और फसल चराई भी रुका। अब हम गौमूत्र भी कर रहे हैं। अभी 28 तारीख से, परसों से हमने गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया। 2 साल के भीतर में करीब 75 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा। अब गोबर खरीदने करना क्या है, तो उसका भी वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दिए, टांका बनवाया, कैसे उसके वर्मी तैयार करना है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है। तो 20 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया और उसको खेतों तक पहुंचा भी दिए। उसे लोगों को करीब 60,000 महिलाएं काम कर रही हैं आज की तारीख में। अब जब गौठान है ही हमारे पास, जमीन आरक्षित हो गया, तो फिर वहां दूसरे भी काम होने लगे कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कोई साबुन बना रहे हैं, कोई अगरबत्ती भी बना रहे हैं। अब हमने उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन उसमें आरक्षित कर रहे हैं और उसमें तेल मिल भी लगा रहे हैं, हालर मिल भी लगा रहे हैं, धान कूटने का दाल मिल भी दे रहे हैं। तो ये सारे मशीनें वहां लगा रहे हैं। तो उससे क्या है कि लोगों, उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री भी मिल रहा है और उन लोगों के जो किसान हैं उसको ज्यादा कीमत मिल रहा है। चाहे सरसों हो, अलसी हो, तिली हो, वो सब चीज उत्पादन करते हैं, उसको कीमत भी मिल रहा है और दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो रूरल, महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना थी, उसको साकार कर रहे हैं और हजारों लोगों को उस माध्यम से काम देने का। तो एक हो गया गोधन न्याय योजना और उसके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा। चौथी बात है कि जो भूमिहीन जो श्रमिक हैं, यहाँ खूब पलायन होता है, क्योंकि बरसात में एक फसल में काम हुआ, उसके बाद काम नहीं, तो हमने उसके लिए भी 7,000 रुपया सालाना, पूरे देश में कहीं नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया। तो इस प्रकार से ये जो पैसा है, सरकार का पैसा गया किसानों के पास, जो उत्पादन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके सही कीमत मिल रहा है और सही कीमत मिलने के साथ साथ वो उत्पादक भी बना। यदि हम केवल उसको पैसा भर दे देते तो उपभोक्ता भर रहता है, लेकिन हमने उसको उत्पादक बनाया और उत्पादक बनाने के साथ साथ वो उपभोक्ता भी बढ़िया। तो इस कारण से पूरे देश में मंदी का असर रहा, पूरे देश में। आप शोरूम है वो बंद होने लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में शोरूम की संख्या भी बढ़ी। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कार जीप हो, सबके शोरूम भी बढ़े, विक्रय भी बढ़ा। अकेले एक साल में हम 76,000 ट्रैक्टर हमने बेचा, खरीदा, हमारे किसान खरीदे। तो ये समृद्धि आई और उसके कारण से जब किसानों के पास पैसा मिला तो वो फिर और दूसरे काम भी करने लगे, अपने खेत के घेरा भी करने लगे, समतलीकरण करने, ट्यूबवेल भी लगाए, घर के संधारण भी कर रहे हैं, सामग्री भी कर रहे हैं।
तो संपन्नता आई। तो छत्तीसगढ़ में के बाजार में भले लॉकडाउन रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा। तो very fascinating overview of what the chief minister and the government have been trying to do in Chhattisgarh. मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर राजन के पास जाऊं, मैं आपसे एक दो और चीजें पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने जब वो पहले स्टैटिस्टिक्स दिए उसमें आपने 37% malnutrition की बात की, आपने 41% एनीमिया की बात की, आपने 40% पॉवर्टी की बात की। आपने एजुकेशन की बात नहीं की। वो आपने यहाँ पे आपके एक इनिशिएटिव है स्वामी आत्मानंद स्कूल, लेकिन जनरली हेल्थ और एजुकेशन में आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? क्योंकि वो इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप डॉक्टर राजन से पूछेंगे या मुझ जैसे लोगों से पूछेंगे, हम तो कहेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन दे आर द फाउंडेशन फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। शुरू में मुझे 5 मिनट बोलने के लिए कहा था, तो मैं उतने देर में समेट दिया अर्थव्यवस्था पे। अब जहां तक के हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं कि बस्तर में आप सब जानते हैं नक्सल प्रभावित है। एक समय था जब मीडिया के साथ ही ये तुलना करते थे साल भर का आंकड़ा निकाल के कि जवानों की जो मृत्यु है वो मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया से ज्यादा मौत हुई या नक्सलियों की गोली चलने के कारण से शहादत हुई। मतलब इतना अधिक मलेरिया हमारे यहाँ था, और उसका जो आंकड़ा आप करेंगे 4.26% रहा है। तो हमने मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया। अब वो आंकड़े 4.26 से घट के तो रायपुर शहर है, राजधानी हो गया, लेकिन यहाँ तो सब सब्जी 12 महीने मिलता है, लेकिन साप्ताहिक बाजार जिस मोहल्लों में भरते हैं ना, वहां जरूर जाते हैं लोग। तो बस्तर में या दूरस्थ अंचलों में निश्चित रूप से हाट बाजार में लोग जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते। जिला अस्पताल में या पीएससी सीएससी में लोग नहीं जाएंगे, हाट बाजार जरूर जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, और उसमें सभी हाट बाजार में हमारे जो हॉस्पिटल डॉक्टर की पूरी टीम और पूरी जांच करी, 40 प्रकार के जांच और दवाइयाँ, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज। और वो हाट बाजार में जाके कम से 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रुकते हैं। और अभी तक के करीब 20 लाख से अधिक, कोरोना काल में ही हम लोग शुरू किया, और 20 लाख से अधिक लोग अभी तक के इलाज करा चुके हैं, मुफ्त में दवाई भी लिए, इलाज भी कराया। उसके कारण से हुआ क्या कि मृत्यु दर में भी कमी आई, मलेरिया में भी कमी आई। और ये सीजन है, रेनी सीजन है, जिसमें उल्टी दस्त की बहुत शिकायतें आती हैं। अब वो ग्रामीण अंचलों में शिकायतें आने लगभग बंद सी हो गई। तो हेल्थ में हमने शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे नगर पंचायत में श्री धन्वंतरी योजना, जो जेनरिक मेडिसिन है, उसकी दुकान हमने खोला, और 50% से 72% सब्सिडी में जो जितने भी हमारे बड़े कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं वो सब मिल रहा है, जो 50% से 72% सस्ते दर पे जेनरिक मेडिसिन। शहरी क्षेत्रों में भी हमने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की, और महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो वो हर वार्ड में जाते हैं, जहाँ श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाते हैं, और निश्चित स्थान है, निश्चित समय है, वहाँ जाते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं, और उसमें भी लगभग 20 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के सस्ता कैसे हो और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, ये हमारी कोशिश। तीसरा, शिक्षा। आप पिछले सरकार में करीब 3000 स्कूल बंद कर दिए, 3,000 क्षमा चाहूंगा, 3000 स्कूल बंद कर दिए।
हमने अच्छा नक्सली लोग ब्लास्ट करके स्कूल बिल्डिंग उड़ा दिए थे, सारे स्कूल सड़क के किनारे आ गए थे। अब स्थिति ये है कि इसी साल जब जून में हमने 16 जून को स्कूल की शुरुआत की तो 260 स्कूल जो नक्सली क्षेत्र में जो स्कूल बंद पड़े थे, 15 साल से बंद पड़े थे, उन सबको शुरुआत की। तो एजुकेशन देने का काम, और फिर यहाँ के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, जो प्राइवेट स्कूल की तुलना में तो किसी प्रकार की कमी ना हो। तो वहाँ स्टाफ और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रकार से डेवलप किए। लगभग 300 स्कूल हमने 2 साल में शुरू की। पहले तो हमने 52 से शुरू किया था, फिर 71 हुआ, फिर 171 हुआ, डिमांड बढ़ती, इस 76 और बढ़ाए, तो लगभग 300 स्कूल संचालित हमने किए। करीब करीब 1.25 लाख बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने बच्चे हैं वो 25% को लेना अनिवार्य है। और फिर लॉटरी सिस्टम हमने कर दिया कि भाई किसी के अप्रोच से नहीं, लॉटरी से हो, तो जो आएंगे जितना आवेदन आए उसमें से लॉटरी निकालें। और इतना आवेदन ये है कि एक सीट के विरुद्ध में 10 आवेदन, एक सीट के विरुद्ध 10-10 अतिरिक्त मांग रहे हैं। हमारे पास उस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी आप पिछले 3 साल में देखेंगे, यदि 15 साल के पिछली सरकार में देखें तो 4 मेडिकल कॉलेज वो लोग खोले, हम 3.5 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज या हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बढ़ाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो एजुकेशन में भी हम लगातार, हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों को अवसर मिले और स्वास्थ्य की दिशा में हमने काम किया। Thank you. अब मैं Dr. Rajan say, I want to come to you, Dr. Rajan, because the Chief Minister has laid out in some ways what economists might say is a big fiscal kind of initiative or initiatives which would obviously cost money. I think in February this year, you wrote a piece for Project Syndicate, I think, which talked about there being no free lunch. In the Chief Minister's remarks, what stands out to you first in terms of what you thought that, oh, this is a really good idea? And then as an economist who does, worry about deficits and debt, what stands out to you on that front? And then the next part, I think we'll be going to, and we'll get into more of the basic income kind of schemes and benefits transfers. But as an introductory thing, what did you think of what the Chief Minister was saying? पहले तो वो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, किसानों को टारगेट कर रहे हैं, आदिवासी को टारगेट कर रहे हैं, और उनके लिए टारगेटेड स्कीम्स हैं। जैसे किसानों के लिए वो क्या मूल्य समर्थन, राजीव गांधी वो क्या इनपुट सब्सिडी कर सकते हैं। नो वो बेसिक इनकम सपोर्ट जो कहते हैं, कितना है 9,000 रुपए साल में। और मैं वो उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहले वो जो सपोर्ट सिस्टम है, तो मेरा एक छात्र है जो उस पर काम कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या किसान उस पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्थापित किया है कि किसान निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? 9,000 तो ज़्यादा नहीं है। वो कर्ज लेते हैं बैंक से, और वो कर्ज ले सकते हैं क्योंकि ये जो पैसे आ रहे हैं वो परमानेंटली आ रहे हैं। तो बैंक समझती है कि हाँ, इनके पास पैसे हैं, और अगर बाढ़ हो या सूखा हो तो तब भी इनके पास पैसे होंगे। और किसान भी जानते हैं कि वो कर्ज चुका सकते हैं, और इसलिए कर्ज लेते हैं, क्योंकि अगर कर्ज चुका नहीं सकते हैं तो बैंक उनका जमीन छीन लेगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये डिमांड साइड से किसान कर्ज ले रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, सिंचाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ उत्पादन बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर 9,000 मिल रही है तो उसके साथ 150%
ज़्यादा इनकम हो जाती है, क्योंकि निवेश करते हैं और निवेश के साथ ज़्यादा मासिक आय हो जाता है। तो दैट इज़ अ स्कीम विच इज़ वर्किंग, and that is a scheme which gives the farmer the ability to grow his income even more by giving him confidence that if he borrows, he will not be especially खेती में काफी जोखिम है ना इस प्रदेश में, so that risk farmer doesn't want to take. And so this gives them the confidence to invest. That's a good scheme. And I think you can see it working. There are other schemes. ये जो आदिवासी के साथ जो मैं समझ रहा हूँ, उनके लिए मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, और मार्केटिंग के साथ they can actually sell their products. And there's a lot of products the Adivasis can make. And if you can create a market for them, because that step from creating the product to actually selling it, that's the step they can't take. If you can fill that gap, you're actually increasing their value. So I think these targeted schemes are very good, and they're increasing. And of course, in a state where there are relatively poor people, your first job is to help them, because after that everything else comes. First, help the poorer get richer. And so that I think is very commendable. Now, one question I would ask on the education front, I think these schools are very good, but ये कोविड के कारण जो गरीब छात्र हैं, वो स्कूल 2 साल का लॉस हो गया उनका, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोगों ने एक तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, ऑफलाइन भी किया, और उसके बाद बहुत सारे शिक्षक है वो मोहल्ले में जाकर पढ़ाने लगे। बहुत सारे हम लोग जो नए नए किए तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके सराहा गया कि बुलटू के बोल इस प्रकार से हमने ऐप बनाया और लोगों तक पहुंचाया, और मोहल्ला में जाके पढ़ाने लगे। तो मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, तो कभी और किसी गुरुजी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध। हालांकि ये बात सही है कि इससे नुकसान तो हुआ है, क्लास में जाकर पढ़ाई करना और घर में रह के पढ़ाई करने में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश थी, हमारे शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की, और करीब 2 लाख शिक्षक जो हैं वो अपने अपने विभाग के बारे में उसके लेक्चर हैं उसको उन्होंने लोड किया, रिकॉर्ड भी किया और लोड भी किया और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। तो ये काम हम लोगों ने उस समय किया था ताकि कम से कम नुकसान हो बच्चों को। कोविड पे और इस एजुकेशन के पे थोड़ा याद आया कि जिन दिनों कोविड का ये वेव चल रहा था, लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा काम हो रहा है। आप लोग छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे जो आपको दिख रहा था कि मुल्क के बाकी हिस्सों में होना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी वजह से? देखिए, पहले फेज में हुआ ये कि ये कोरोना है जो हवा के मार्ग से आया, हवाई जहाज से आया पहले फेज में। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग हैं जो हवाई यात्रा कर, खासकर यूके से जो आए। पहला केस तो वही मिला, यूके से जो पढ़ने गए थे बच्चे वापस आए, वही कोरोना पहले मिला। तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर ले कितने लोग विदेश से आए हैं, कितने लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो सबको ट्रेस आउट करके, और उसके बाद पूरी सीमाओं को सील कर दिए। गाँव वाले तो अपने गाँव के बाहर में कटीले जो पेड़ है उसको काट के रास्ते में रोक दिए थे ताकि हमारे गांव में कोई घुस ना पाए। फिर हमारे यहाँ मजदूर जो दूसरे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गए थे, 47,000। तो वो लोग आए तो फिर 7 लाख लोग आए। तो 7 लाख लोग आए तो उसको रोकना कहाँ है, उसकी इलाज की व्यवस्था, क्योंकि क्वारंटाइन भी रखना है उसको 21 दिन का। फिर सैंपल आएगा, टेस्ट होगा, सैंपल लिए, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आए, तब उसको घर जाने की अनुमति होती थी। तो जितने भी पंचायत हैं, जितने स्कूल है, करीब 21,000 हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, और उसने जितने दिन वो रह रहे हैं उसको फ्री में उसको भोजन कराने की व्यवस्था। वो तो यहाँ टाटीबंद में आपका
किए थे। तो हुआ ये कि जित 7 लाख लोग आए, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उसकी इलाज की व्यवस्था, और जब वो हो जाता था कि कोरोना नहीं है, तब फिर उसको घर में जाने देते थे, नंबर 1। दूसरा, जब ये व्यवस्था किए तो दूसरे प्रदेशों में जब ये पता चला, तो ये छत्तीसगढ़ बीच में है, चाहे वो तमिलनाडु से आए, चाहे वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात के लोग, ये लोग भी जिनको उत्तर प्रदेश जाना है या झारखंड जाना है या उड़ीसा जाना है, तो इसी रूट से करते थे। तो ये जहाँ बैठे हैं उससे 5 किलोमीटर दूरी पे एक चौक है, टाटीबंध चौक। तो जो किराया करके आते थे वो यहाँ तक आते थे, और यहाँ तक के उसके बाद उनको ये पता था कि छत्तीसगढ़ सरकार अब हमारे प्रदेश की सीमा तक छोड़ देंगे, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उस सीमा तक के छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। हम हमारी भोजन की भी व्यवस्था करेंगे, हमारी जूता चप्पल की भी व्यवस्था करेंगे, इलाज की भी व्यवस्था करेंगे। तो ये विश्वास पूरे पड़ोसी राज्य के लोगों को हुआ। सेकंड वेव में जब ऑक्सीजन की कमी आई, पूरे देश में हाहाकार मचा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे, चूंकि ये सौभाग्य है कि हमारी स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो जो जितने भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे थे, हमने तत्काल उसको मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने के लाइसेंस भी दिए, और हमारे प्रदेश के लिए तो हमने पूर्ति करवाई ही। पड़ोसी राज्य चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान भेजना है, पंजाब भेजना है, दिल्ली भेजना है, यूपी भेजना है, सब जगह हम भेजे। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने किया। तो देश में मतलब जहाँ दिल्ली में जो हाहाकार मचा था, हमारे छत्तीसगढ़ में उस प्रकार से न रेमडेसिविर के लिए कोई लाइन लगा, न किसी प्रकार की दवाई की। बल्कि हमने क्या किया कि जितने भी हमारे, सबसे ज़्यादा जब कोरोना मरीज बढ़ने लगे तो शहरों में ज़्यादा दबाव पड़ता है, बड़े हॉस्पिटलों में ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो जितने भी जिले मुख्यालय हैं उसके सराउंडिंग में जितने हॉस्पिटल थे, वहाँ जितना बेड लग सकता है वो सब बेड लगवाए। हमारे पास स्टाफ तो थे, डॉक्टर भी थे, साथ ही उसमें ऑक्सीजन की सब व्यवस्था करी तत्काल 8 दिन के भीतर में सारे। तो जैसे साझा क्षेत्र है, अब वो शहर से दूर है, अब सब लोग शहर में आते हैं। 50 बेड का हमने कोरोना सेंटर बना दिया। मेरे क्षेत्र में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में वहाँ 40 बेड का बना दिया। तो हर क्षेत्र में इस प्रकार से हमने कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कर दिया। तो वो जो गांव के लोग हैं जो शहर में आते थे, वो आना रुक गया। तो शहर के लोगों को इलाज कराने की भी आसानी होगी, गांव के लोगों को भी आसानी होगी। तो इस प्रकार से मैनेज हम लोगों ने किया। तो उस प्रकार से दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से, उत्तर प्रदेश में जैसे गंगा में लाश दबाए, हमारे छत्तीसगढ़ में उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी थी। In fact, I don't know if any other country had this example of dead bodies floating down rivers, and it was very distressing. Dr. Rajan, we have this unique opportunity where we have a policymaker who still has, I think, 1.5 साल अभी आपके इलेक्शन में है roughly. हाँ, 1.25 साल 1.5 साल. Or you were earlier talking about a service economy in some way. So I'm getting away from the topic of basic income for a moment, because ultimately, everybody is looking to see how we can create jobs, how we can have a better economy, how we can have a more equitable economy, how we can reduce poverty. And this is a state which is very poor. Can you, in some ways, think of your example of this chip factory that takes up so much money, and instead policymakers could consider higher investments in health and education, and why that is important? Because for a state, for example, with 37% malnutrition, that means when these children are growing up, when they do grow up, they become adults, their brains are not well formed because they've been malnourished. What would you say to the Chief Minister in terms of allocation of scarce resources for a state? No, I think the question is how can you generate employment locally, नहीं? और मुख्यमंत्री बात कर रहे थे about how specific investments can help. तो अगर रूरल इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर वैल्यू एडिशन बढ़ाना चाहते हैं और इतना सारा
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे तो किस तरीके से करना चाहिए, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। और पहली बात ये है कि हम वो चीज उत्पादन कर रहे हैं जो हमारे यहाँ हमको जिस चीजों की आवश्यकता है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे फॉरेस्ट हो, जो चीजें हैं उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट हम बनाएं, उसके बेचने के लिए हम लोगों ने सी मार्ट भी बनाया है और दूसरे शहरों में भी हम अपने शॉप खोल रहे हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी किस प्रकार से जाएं वो हमारी कोशिश। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी यदि इंडस्ट्री लगाए तो सबसे पहले जमीन की आवश्यकता पड़ती है, फिर पानी की आवश्यकता पड़ती है, फिर बिजली की आवश्यकता पड़ती है। हम हर गांव में 10-11 हजार पंचायत हैं, हर पंचायत में हम ये बना देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन भी है, हमारे पास हैंड्स भी हैं, आप जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, और फिर बिजली की भी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जमीन खोजने की जरूरत नहीं, आप सामान क्या चाहते हैं वो बता दीजिए, हम आपको बना के दे देते हैं। आप पेकिंग आप का रहेगा, आप अपना सिंबल लगाना है वो लगा दीजिए, जो लगाना है लगाइए, हम तो उत्पादन करके आपको दे देंगे। ये भी हम कर सकते हैं। ये तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात होगी। अब बचत जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको भी हमने इस प्रकार से बनाया है कि सारे उद्योगपतियों, कई बार हमने मीटिंग की और उसके बाद 2019 की उद्योग नीति हमने बनाई, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहीं के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफी एमईओ कर रहे हैं और प्लांट भी लगा रहे हैं, और हमारी पॉलिसी ये है कि 60% से लेकर 150% तक के हमारी 10 साल में सब्सिडी है। तो मैंने उद्योगपति से बात की, इस पॉलिसी से फायदा क्या होगा? बोले साहब देश में बहुत एनपीए हो रहे हैं उद्योगपति, आपकी पॉलिसी में कोई उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। हमने उस प्रकार से भी पॉलिसी बनाई है तो लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। कोरोना काल में सबसे पहले जो उद्योग का पहिया घूमा था हमारी छत्तीसगढ़ में घूमा। आपको याद होगा 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, ताली थाली बजवाया था, मोमबत्ती जलवाए थे, और उसके बाद 22 तारीख से लगा 22 अप्रैल को खुला। हमारे यहाँ 23 तारीख को सारी इंडस्ट्री शुरू हो गया, क्योंकि हमने मजदूर को जाने नहीं दिया था, यहीं रुको, खाने पीने की यही व्यवस्था करो, क्योंकि मतलब प्लांट चलाना है तो आपको इंजीनियर भी चाहिए और स्किल लेबर भी चाहिए, सेमी स्किल भी चाहिए। तो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक जो मजदूर हैं वो बाहर गए नहीं थे। यहाँ से टोटल उस समय कोरोना काल में 16,000 लोग गए थे छत्तीसगढ़, 7 लाख लोग आए और 16,000 गए यहाँ से। तो हुआ क्या कि हमारे उस समय का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पूरे देश में सबसे मतलब स्टील कहीं उत्पादन हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ, और यहीं से पूर्ति हुई, चाहे सीमेंट हो चाहे स्टील हो, सारे उत्पादन यहीं से हुआ। मानिए आज 2022 में हम इस सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारी अभी ठीक चल रही है, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे को चैलेंजेस तो आएंगी, 2 बड़ी चैलेंजेस जो हर किसी स्टेट को फेस करनी पड़ेंगी, पूरे हिंदुस्तान को फेस करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को। एक चैलेंज है टेक्नोलॉजी का और दूसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पे ये है कि 2018 में एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसे हालात रहे तो 2050 तक लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में ओवरऑल गिर जाएंगे, और जो स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन। तो क्लाइमेट चेंज तो अब आ नहीं रहा है, वो तो आ गया है। एक तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अभी से ही। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जॉब्स पे इम्पैक्ट करेगी, आपको ये भी उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है डॉक्टर राजन, you were talking earlier about a workforce that adapts, a society that adapts to changes. And societies that adapt to changes are those that are well educated, that are healthy, that are well trained, that are skilled. From your experience, looking at what you've seen around the world, can you give us some examples that the Chief Minister can benefit from in terms of what kind of models exist
where people are taking these challenges into account, especially on technology, for example, how to create that workforce that is adaptable to face any challenge. मानिए 5 साल में आपका job redundant हो रहा है, and but your training is such that you can adapt to that. Skills, कोई ऐसी फिर the governments can help. Do you have some examples to share with the Chief Minister and with the audience? इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत ही कम हैं. एक एग्जाम्पल है डेनमार्क. डेनमार्क में जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, वो तो हर महीने, हर क्वार्टर, 3 महीने में एक बार जाते हैं कंसल्टेंट के पास और पूछते हैं हमें क्या सीखना चाहिए. ये नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं और उस काम में जो हम सीखते हैं वो काफ़ी है कि नहीं. वो पूछते हैं कि अभी आने वाला जो शॉक्स हैं उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके लिए हम कैसे तैयार करेंगे. तो वो कंसल्टेंट पूरे उद्योग को देख के, बाहर देख के, अंदर देख के, पूरे दुनिया में देख के बताते हैं हाँ आपको ये कोर्स करना पड़ेगा. और फिर वो फैक्ट्री एम्प्लॉयर जो है उनको फंड करते हैं, वो बाहर जाके सीखते हैं और फिर वापस आते हैं. वो जो स्किल्स जो सीखते हैं वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन आने वाले शॉक्स के लिए फायदा है. प्रिपेयर करते हैं वो वर्कर्स को. तो दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग. उसके लिए एक नाम है एक्टिव लेबर मार्केट. Active labor market. They're trying to prepare the workers for the work of tomorrow, even though it has no use today. And the employer is paying for it. The employer is paying for it because that's the way they keep the workers. And the workers are then prepared for the next shock that comes. Okay? That is an extreme version, where you are trying to keep the worker engaged all the time. The other extreme is where you don't invest in the worker at all. They're doing the work, and then one day you say, I have to close the plant down. GM, General Motors, closed down its plant in Lordsville. The workers didn't know how to use a computer because they had never seen the need to do it. It was not part of their job, and they hadn't learned how to use computers. In this day and age, you have workers who don't know how to use computers. They have no job alternative because every job requires computers. So that's the extreme. One way you're preparing for the job that is to come. One, you're not even preparing them for the technologies which are already commonplace. We have to find a way to go in between. I think the important thing is to give the employer an incentive to invest in their worker. And for that, we have to worry about the way our labor laws are structured. At one extreme, employment is at will, contract labor. You have no incentive to invest in the worker because next year you will fire them anyway, and you get some new workers. So contract labor is not working. You're not investing. Other side is permanent workers, because they become permanent. And then again, they're not working very hard. You're relying really on the contract labor. We need something in between, which gives workers some longer term employment, but doesn't necessarily make them permanent. But the longer they stay in the work, the more rights they get, the more pension they get, the more security they get. If we can do that, then those workers will be workers the company can invest in because it knows they're going to stay. It doesn't have to fire them every week. Something like that will help us invest in our workers. We need to invest in order for them to be capable of surviving those shocks. Okay, before I go to the Chief Minister, let me get your thoughts on climate change. How serious a problem is it really, especially for a country like India, especially in economic terms? It's a huge problem. I mean, we're talking about agricultural shocks. They'll get just bigger and bigger. Flood, drought, all the usual things we're thinking about will get worse. And
our farmers don't have that much sort of buffer. As the chief minister said, if one year you have this thing, you get knocked out. 1 year you have drought, 1 year you have floods, you get knocked out. So because our people are poor, climate change has so much more effect than if they were rich. And of course, we are going to be at the center of, I mean, the monsoon is going to be deeply affected. Our glaciers are already, melting. Weather is going to become, we've got temperatures of 50 degrees plus in Delhi now. So we are going to be very affected. That means we have a strong reason to push the world to do something on climate change. And if the political leaders say that, look, we have the PM Kisan Yojana, or we may have the Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, are those going to be enough to have a sustainable response to climate change? Those are supports, samarthan, but they're not substitutes for income. 9,000 per acre, average holding is about an acre. No? Average farm holding in India is acre and a half. So 15,000 is not going to be enough if the crop fails. We really need to, obviously over time you hope the farmer gets richer, goes to value-added work, all that. But you also hope that we somehow do something about climate change so that we don't have those enormous shocks which otherwise would come. तो अब आपने क्लाइमेट के बारे में तो पूरा ग्लेशियर तो आपके जम्मू कश्मीर में है, आप इतना गर्मी मत करो कि वो पिघलने लगे। हमारे तो सारा पिघल गया। मुख्य रूप से बात यह है कि आज कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है और उसके कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो पूरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन है वो 20% की गिरावट आया इसी 1 साल में। 1 डिग्री बढ़ने से 2 डिग्री हो तो समझ लो फिर वो 40% गिरावट। तो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन है उस कैसे हम उसको खाद के रूप में चेंज करें, बदलें। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, हमारे पैराली जो जलाने की बात हो रही है, हम रोकने की कोशिश उसी माध्यम से कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि लगातार जो पानी हम लोग जमीन से, धरती से निकाल रहे हैं, वो भी कारण है कि जमीन की नमी कम हो रही है और उसके कारण से वेजिटेशन भी कम हो रहा है। उसके कारण से जंगल जल्दी गर्मी आने से पहले ही पेड़ पत्तियां उससे झड़ जाती है। तो हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम बनाया है, नरवा कार्यक्रम, और करीब 12,000 हमारे छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं और 30,000 में 12,000 नाले हैं। हमने पिछले 3 साल में उसका प्रोग्राम बनाया और रिचार्जिंग की व्यवस्था की और उसके कारण से हुआ कि जंगलों में हरियाली भी बढ़ी है। हमारे हाथी खूब है, तो हुआ कि जिन जिन जंगलों में ठीक ठाक ढंग से हम लोगों ने काम किया नरवा में, तो पानी भी मिल गया, उसको हरे चारे भी मिल गए। तो हाथी वो 6-7 महीने से हिल नहीं रहे वहां से, उन जंगलों से जहां जहां पानी खाने पीने की व्यवस्था हुई। तो वो इंसान के लिए भी जरूरी है, पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है और जंगल के लिए भी जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसमें बहुत जरूरी है कि अभी अब सरकार पहले शौचालय बनवाई, अब घर घर में नल जल योजना, पानी की व्यवस्था पर नहीं कर रही केंद्र सरकार। यदि पानी की व्यवस्था पहले करते तो शौचालय बाद में बनाते, तो वो हुआ नहीं। अब मैंने सोचा जब आप क्लाइमेट चेंज का जवाब देना शुरू किया आपने, मैंने सोचा आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। तो किसी बड़े बड़े साहब ने कभी कहा था ऐसा। एनीवे, इसके बाद एक हिसाब से ये जो हमारा डिस्कशन था, हम अब उस जगह पे पहुंचे हैं जो एक हिसाब से इस टॉपिक, इस हमारे सेशन का जो टॉपिक है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं मुख्यमंत्री से? ये जो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वो आपने जो पंचायत को पावर दिए हैं ये सैंड माइनिंग को कंट्रोल करने में, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कौन से पावर्स नीचे जा सकते हैं पंचायत को? देखिए, अभी हम लोगों ने पंचायती राज तो हमारे यहाँ लागू है,
पैसा कानून 1996 से बना हुआ है, नियम बनाने का काम अभी हमने किया, मतलब 1996 के बाद से उसे नियम बने नहीं थे, तो उसको पंचायतों को, ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाना, तो उसमें खासकर ये जो पेशा है वो जो अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे यहाँ करीब 146 ब्लॉक है, जिसमें से 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित मतलब ट्राइबल के लिए आरक्षित है। तो उन ब्लॉकों में जो पेशा कानून जो नियम लागू होगा, तो उसमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है कि उनको क्या क्या काम करना है, जंगल में उसके आवंटन के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ के जो माइनर मिनरल्स के लिए उनको अधिकार दिया गया है कि वो बेचें ना बेचें, कैसे करना, उसको उपयोग किस प्रकार से करना, वो सारे अधिकार दिए गए। वो कैसा चल रहा है अभी? अभी देखिए, पहले तो ये था कि धड़ल्ले से चल रहा था, अभी बीच में हम लोगों ने उसमें ऑक्शन सिस्टम किया, ऑक्शन में भी कुछ शिकायतें आई, लेकिन एनजीटी का उसमें पालन तो हो रहा है, बिना एनजीटी के क्लियरेंस के बिना वो खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं वायलेशन की शिकायत होती है, उसमें कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये है कि नदी भी बचाना जरूरी है, और नदी यदि बचाना है तो रेत उसमें होना जरूरी है, तो नहीं तो फिर वो भूमि क्षरण भी होगा, और इसलिए मकान बनाने के लिए रेत भी चाहिए, वो भी जरूरी है, बिना नहीं तो आज तो तमिलनाडु में या वहाँ ये हो रहा कि समुद्र से निकाल के पीस के फिर उसको मिला रहे हैं सीमेंट में और तब मकान बना रहे हैं। वैसे हमारी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ नदियों में नालों में रेत खूब है, लेकिन उसको मतलब ठीक ठाक ढंग से उपयोग करना चाहिए, बेतहाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। We will have audience questions. Yeah, we can take a few questions if But you'd like. let me just finish with one last question. So we have 15 more minutes, so go ahead. Okay, good, very good. So our topic, actually, we started with Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, but that is just one initiative and many that the government took. So, but that did give us this idea that there is possibly a discussion around the country, around the world, about minimum basic income. What is your view, Dr. Rajan, on, the Congress party had at one point come up with the Nyaya Yojana that we wanted to implement. It was 6,000 rupees per month, I think, per family. What is your view on, cash transfers of that sort? If you do like them, should they be conditional? Should they be unconditional? What is your view on minimum, basic income or universal basic income? So I think that you have to give poor households enough cash that they can take care of some minimum requirements, including education, including healthcare. I would say, by and large, you should rely on them to make reasonable choices. You don't want to say, आपको इस पे खर्च करना है, उस पे खर्च करना है. Let them decide. They're wise enough to decide. But I think it should be targeted. And how much depends. I don't know if 72,000 a year is the right amount. But I don't think it should go to everyone. We can't afford it. We can't afford it. I think it should be very targeted, and it should be enough for a reasonable investment in children, in healthcare, etc. Because the ultimate aim is not to keep them on that income, is to help them grow out of that income so that they can have, better jobs, better chances in life. So I would say targeted, not conditional. Don't put too many conditions. Once you put conditions, then you create the conditions for corruption, this, that. Not too many conditions. But it has to be enough for basic needs. But the idea is not to keep them permanently there. The idea is that they grow out of it so that somebody else can benefit from it. And are there examples around the world where entitlements were given and then taken away from people? You don't take them away, they grow out of it. Means it comes down as they make more incomes outside. Okay, I see. So you won't, taking away is not possible. Not possible. But they grow out of it, and
it has to be smooth, so they don't suffer a huge cost if they get a better job. Okay. आपकी क्या राय है इस बारे में कि जैसे न्याय योजना थी या जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों को, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपकी जाती राय क्या है ऐसी चीजों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप केवल पैसा ट्रांसफर कर देंगे किसी को भी, तो वो एक उपभोक्ता बनेगा वो, और वो मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो गरीब का गरीब रहेगा। लेकिन यदि आप उसे उत्पादक भी बनाएंगे, उत्पादक बनाने के लिए आप सपोर्ट करते हैं, जैसे हम पीएम जो किसान सम्मान निधि है और हमारे में अंतर क्या है? हाँ, ये बताइए। अंतर ये, वो कोई किसानी करे या ना करे उसको पैसा मिलेगा पीएम सम्मान निधि में। हमारे में ये है कि वो किसान मेहनत कर रहा है, उसमें उत्पादन कर रहा है और वो बेच भी रहा है, तो उसे खरीदने की भी व्यवस्था है ना। भाई, आप प्रधानमंत्री क्षेत्र में चल दीजिए तो 1100 रुपए क्विंटल में धान बेच रहे हैं, हमारे यहाँ हम 1900 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, और उसके बाद 9000 रुपए दे रहे हैं प्रति एकड़। तो जो मेहनत कर रहा है उसको पैसा दे रहे हैं। इसी कारण से मैं शुरू में बताया कि हमारे किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में भी और रकबा भी। जो खाली पड़ी हुई जमीन थी उसमें खेती करना शुरू कर दिए, तो वो मेहनत करने लगा। जब हर इंसान यदि मेहनत करने लगेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति भी बढ़ेगी उससे। आप खाली बैठे बैठे दे देंगे तो वो उपभोक्ता बन सकता है, वो राष्ट्र के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। यदि वो उत्पादन कर रहा है उसको सपोर्ट आप करोगे, जो मेहनत करने वाले उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कराएंगे, उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका उपभोक्ता भी बनेगा, उत्पादक भी बनेगा। तो एक हिसाब से ये कंडीशनल ट्रांसफर हो गया, जिसमें अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर राजन जैसे एक्सपर्ट आपको कहेंगे कि इसमें करप्शन का खतरा होता है। नहीं, हम तो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं। आप डायरेक्ट पैसा इसमें कम चांस है। जमीन के अगेंस्ट जमीन वो तो रिकॉर्डेड है, जमीन है। अच्छा, और जैसे हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसमें क्या करप्शन होगा? उतना सामान तो हम उससे खरीद रहे हैं। अगर कोई वहां से कहे कि भाई हम इसमें कोई ऐसा चांस है कि कोई कि हम तो किसानी कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है? वो तो धान बेचने आएगा ना। हाँ, ऐसी सोसाइटी धान बेचने आ रहा है। वो तो रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं बताया कि 2017 में 15 लाख किसान थे, आज वो किसानों की संख्या बढ़ के 23 लाख है। धान का रकबा 22 लाख था हेक्टेयर में, आज 30 लाख हेक्टेयर है। धान 70 लाख मीट्रिक टन था, आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो उत्पादन भी बढ़ा, जमीन का रकबा भी बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ा, पैसा भी लगा। और इसी में ये डिफरेंस है मेरे ख्याल में। तेलंगाना के हमारे जो AIPC के लोग थे वो बात कर रहे थे कि रायतन बंधु जो उनकी स्कीम है उसमें आप कुछ करें ना करें आपको पैसे मिलते हैं, तो लोग बेसिकली पैसे ले रहे हैं, जमीन है लेकिन काम नहीं कर रहे। आपकी स्कीम मेरे ख्याल में उस लिहाज से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मुल्क को पता चलना चाहिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का क्या, मैं नहीं कहूंगा कि आपका कोई अलग मॉडल, थोड़ा मुल्क को सीखना चाहिए एक दूसरे स्टेट से। अगर आपका कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो हमें ज्यादा फिर उसको थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि हमें प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मार्केट करना चाहिए ताकि बाकी स्टेट्स को फायदा आ सके, कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर प्रदेश में किसानों को यदि आप इस प्रकार सपोर्ट करेंगे, उसके उत्पादन, उसे खरीदी की व्यवस्था, मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ सेब यदि खरीदने की व्यवस्था कर दें तो किसान क्यों दुखी रहेगा? और उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और ज्यादा कीमत भी मिलेगा। तो इससे मुझे कुछ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि छत्तीसगढ़ का भी अपना एक मॉडल है। ये मुझे समझाइए, ये छत्तीसगढ़ी कल्चर, ये कल्चर क्या है? ये छत्तीसगढ़ी जो आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पे, मैं सुनता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी एक हिसाब से थोड़ा हट के हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक से, लेकिन इन सम वेज लिंक्ड है। तो ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ के हमारे बाकी लोगों को बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक पहचान है। मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, लेह का अलग है, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो हमारे यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ की ट्रेडिशन है, यहाँ की संस्कृति है।
और इसमें आप देखेंगे कि आदिवासी 32% हैं और बहुत सारी उसकी जातियां हैं। तो उसके अलग अलग, जैसे आज जो नृत्य किए वो बस्तर के हैं, लेकिन पूरे बस्तर में इस प्रकार से नृत्य नहीं होते। थोड़े थोड़े दूरी में अलग अलग जो उपजातियां हैं आदिवासियों को अलग अलग नृत्य है, अलग अलग सीजन में उनके नृत्य होंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारी जो संस्कृति यहाँ यदि कहेंगे तो हजारों साल पुराना है। तो हमारी संस्कृति प्राचीन होते हुए भी हर युग में इसका अपना महत्व रहा है। यदि बौद्धकालीन भी बात करेंगे तो भगवान बुद्ध के बाद यदि संतों में आप देखेंगे नागार्जुन का बड़ा नाम है बौद्ध। तो नागार्जुन का कार्य क्षेत्र यही छत्तीसगढ़ का सिरपुर रहा। यदि राम की बात करें तो सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने वनवास के समय यही गुजारा, क्योंकि ननिहाल यही। कृष्ण भी यहाँ आए, आरंग में यहाँ उनका आना हुआ था। तो हर युग में आजादी के समय भी कहेंगे तो राष्ट्रीय जितने भी हुए उसमें हमारी भूमिका रही। चाहे 1857 की गदर हो तो हमारी भूमिका थी, शहीद वीर नारायण सिंह से लेके आप ज्ञान सिंह की बात करें, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और फिर साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे सबसे पहला जो उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह, सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा गया। तो साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता आप कहेंगे तो सबसे पहली शुरुआत छत्तीसगढ़ से। यदि आप लोहा बनाने की भी बात करेंगे तो वो कम टेम्परेचर में कैसे बिना राष्ट्र के लोहा बनाने की विधि हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी भूमिका रही है। तो हमारी जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। लेकिन हम लोग बहुत लो प्रोफाइल वाले लोग हैं, कम में संतोष करने वाले लोग हैं। हमें थोड़े में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हमको बहुत ये इकट्ठा करके रखो। ये संत ऋषि परंपरा के लोग हैं यदि कहा जाए छत्तीसगढ़ के लोगों को, थोड़े में संतुष्ट रहे, प्रकृति के साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त मौला लोग हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं, सहज सरल लोग हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बोला आपने। अब दो लास्ट इंटरवेंशंस, पहले मैं डॉक्टर राजन के पास जाऊंगा और आपको मैं टाइम दूंगा। आपका जो लास्ट इंटरवेंशन है उसका मैं आपको पहले ही बताऊं। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब हम मुझ जैसे लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे, हमसे जॉब वो इंटरव्यू में पूछते थे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, उसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन छत्तीसगढ़ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, लेकिन दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। आप सोचिए उस पर। Dr. Rajan, this is obviously a unique opportunity. Again, I thank you, and we have one more session with you tomorrow. We are so grateful. To the Chief Minister, if you had to give him one suggestion, something that you think Chhattisgarh should be looking out for, what is it that you would tell the Chief Minister? What should he be doing while he is the Chief Minister, he's the leader of the state? What can he do that would benefit Chhattisgarh or maybe the country? What is it that, or what should he be, what should he as a senior leader of the Congress party, one of the main opposition party here, what should we be thinking about when we think about India, when we think about Chhattisgarh? What should we be watching out for? See, I think to give good advice, you have to know the state well. वो बाहर से आके थोड़ा एडवाइस देना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 2015 में आया था 2 दिन के लिए, अभी 2 दिन के लिए हूँ। 4 दिन में क्या एडवाइस दूंगा वो तो। But you know India well. India, I know reasonably. I'll tell you what's on my mind. Okay. What's on my mind is I really fear we are losing our children because of what happened in COVID. I think Chief Minister gave us some thoughts on how they're helping, but I think whatever help we give, we need to give more. Because those 2 years, children haven't been in school.
they've forgotten so much. Getting them back to school, if we just put them, oh, they were in second grade, we put them in fourth grade. I think they will not be able to keep up. And many children will find they don't understand what's going on in class, they will leave, they will drop out. And this will be more in the case of the poor children. We have so many Adivasis in this state. The problem will be more there. I really think we should be checking to see how they're doing. Lot more of these ये जो एसर करती है या प्रथम करती है, go in, check what they're learning and see if they need more help. Because otherwise we're going to lose this whole, from class 1 to class 12, all those children have suffered 2 or 3 years worth of education loss. And if they just move on without recognizing that, it'll be a real problem because they'll be so weak. I think there's a good chance of helping them by putting more resources to work. And that'll create some jobs for some time, but I think it's the most important investment we can make across the country. I know Tamil Nadu is trying to do it, but even Tamil Nadu is having, it's not that easy. They've recruited some 2 lakh people to help the existing teachers in order to bring the students up to speed. And they found 5 lakh children had left the schools. Wow. So this is a big problem. I would say we need to face this problem in India. Otherwise, we have a lost generation. Now, आपने तो notice लिया होगा इस चीज का. Now, please think about it. One quick step would be to do a kind of an assessment to where we are, baseline assessment कि क्या हुआ है, reading levels में क्या हुआ, and that can be done relatively quickly. At least problem का पता होगा. Unfortunately, what I see in India is that at least the government doesn't seem to, at least the central government doesn't seem to accept that there are problems. जब आप data को छुपाएंगे, जब आप problems को accept नहीं करेंगे, then you cannot really solve those problems. I haven't heard much talk in Delhi about this being a problem. Well, I think in the states you can that is see a problem. that they're seeing this as a problem. But Delhi is not talking about it. It's talking about we'll create some electronic resources. But you also need to see what's happening in the schools and exactly testing, baseline testing, I think. तो आपने तो अपने जवाब सोच लिया होगा कि 5-10 साल में आप खुद कहाँ देखते हैं और छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कहाँ रहूंगा तो ये तो पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ कहाँ जाए ये जरूर सोचता हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखों ने जो सोचा था समृद्ध छत्तीसगढ़, ये चूंकि शांति के टापू है, एक बार छत्तीसगढ़ आ जाए ना तो उसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़ते नहीं। तो वो जो वातावरण है और हमारे आदिवासी उन्मुक्त जीवन प्रकृति के साथ व्यतीत करने वाले, तो उसी प्रकार के शांति भाईचारा का वातावरण फिर से बने। दूसरा, समृद्धि आए, जिस प्रकार की जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो सबके यहाँ समृद्धि आए और फिर उनके पास समृद्धि होगी तो फिर आगे जनरेशन, उसकी मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हम कर ही रहे हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं वो उन पे छोड़ना चाहिए। लेकिन वो सपना तो देख सकें, उसके घर में इतनी संपत्ति तो रहे कि वो बच्चे आगे जाना है, उसके उसना आधार तो हम खड़ा कर दें, तो फिर आगे खुद बढ़ जाएंगे। चलिए, this is a good note to end on. That unfortunately we don't have time for questions, I'm told, right? So and the Chief Minister has to leave. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. जी, धन्यवाद. Dr. Rajan, thank you so much. This is an illuminating discussion. A round of applause. Thank you. Before we conclude, I'd like to request Honorable Chairman Dr. Shashi Tharoor to please come on stage. We have a small memento, sir. A small memento here.
Ladies and gentlemen, we will take a 30-second commercial break while you reset the stage. We're going to continue, as I said, without any tea or coffee break. The next session will be the AIPC National Executive in introduction. Thank you. दो और सेशन है। अरे गौ माता के गोबर लाया, अरे गौ माता के गोबर लाया, अरे गौ माता के गोबर लाया, चमका दे। ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है, संगवारी ओ सीएम नहीं है, मोर काहे सुन ले संगवारी नहीं है। किसान मन के कर्जा माफी, किसान मन के कर्जा माफी, किसान के साथ किसान के साथ अरे गौ माता के गोबर ला, जे सोना कस चमका दे। अरे गौ माता के गोबर ला, जे सोना कस चमका दे। ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है, मोर का काहे सुन लेते संगवारी। ओ सीएम नहीं है, मोर काहे सुन लेते संगवारी। अरे किसान मन के कर्जा माफी,
भूमिहीन किसान के साथी, अरे किसान मन के कर्जा माफी, भूमिहीन किसान के साथी 2500 दिलवादिस। ओ सीएम नहीं है मोर बेटा है, सुन लेते संगवारी। ओ सीएम नहीं है मोर बेटा है, सुन लेते संगवारी। अरे ताई दीदी क्लिनिक लाला के, माँ बहिनी के लाज बचा के, अरे दाई दीदी क्लिनिक लाला के, माँ बहिनी के लाज बचा के, घर घर सब सुविधा देस। ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है, ओ सीएम नहीं है मोर भैया है, सुन लेते संगवारी। ओ सीएम नहीं है मोर भैया है, सुन लेते संगवारी। मानेल पढ़ी संगवारी हो, काका है तब भरोसा है। Okay, I'll start. So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us. It's been a rather interesting and inspiring day for us. This session essentially is an opportunity for us to just compare notes. So, Chairman, starting with you, it's now, most people don't know this, it's more than 5 years that we've actually had AIPC, because if you remember, we began thinking about AIPC a lot longer than 5 years and spent a lot more time operationalizing it. Would you The care? official establishment on 24 Akbar Road, 2nd of August, 5 years. 2017. But what about the story before that? The story before that, as I briefly mentioned in my remarks this morning, involved a fair amount of sort of persuading the party of the usefulness of this exercise. And I have to say that initially, I think there was some understandable skepticism, and especially when the government is yours, you're in power, you don't really seem to see the need to do more than you're already doing. If what you're doing is good enough to bring you to power with an enhanced majority, why do you need to keep improving? That, I think, was implicit there. So I don't think, frankly, the idea kicked around a bit here and there, but nothing really worked. During the second term, there was a little more traction.
And I think it's partially because, frankly, we had been a bit shocked by the scale of the party's defeat. And there was a greater willingness to entertain new ways of reaching out to new sections. So from the party leadership's point of view, it was a way of adding a new constituency to the Congress. From my point of view, I was thinking much more in terms of the kinds of families I knew who were from professional backgrounds and felt alienated from politics. I thought, let's get them back in and get them into a situation where they can have some contact with the Congress leadership. And in that way, we can build a bridge, a meaningful bridge between the two sides. And I'm very glad that in the end, Rahulji found that a persuasive argument. And by the middle of 2017, he was already planning a number of revamped and revived institutions in the Congress. So some of the existing ones were to be reshaped and revived, and then two new departments were created. One was the All India Professionals Congress, and the other was the Indian Overseas Congress, one headed by me, one headed by Sam Petroda. And those were both ways of looking at new constituencies for the party in the 21st century. So I wanted to just come to you, Salmanji. As a professional, you've had a very interesting profile. The fact that you come from Kashmir, the fact that you've spent so much time at the World Bank, the fact that you've even contested elections in a part of India that unfortunately today is not really known to be a safe haven of comfort and growth. Going from all of that to where you are today and wherever you will be in the next 10 years, what are your comments and observations? Well, my life has been a pretty strange journey, but sometimes despite your best efforts, life basically has its own kind of path for you, and I think in more recent years, I've basically embraced it. AIPC has been in that sense. For me, it was just perhaps at a time in my life where I was not able to devote time, full time to retail politics. I did contested Baramulla and all that. And this seemed to me, AIPC seemed to me to be the right thing for me. Why? I was interested in politics. I've been interested in politics ever since my father went to Parliament in 1983. So I've always had this goal that I should be in politics. I wanted to be in politics. I thought this was a wonderful profession in that sense. But for a variety of reasons, mostly personal reasons, I couldn't kind of do the kind of retail politics that I actually love. I love going and speaking in public. I love shaking hands. I love babies, holding babies, all the things that politicians do. And I love trying to help people. So all the things that a politician should be like, I was that, but I couldn't continue that. But this AIPC was that ultimately became my sweet spot, because this, I'm a professional. I spend my life, doing that kind of work. And then I had this as an outlet for politics. And, frankly, being part of this department, being part of, and being part of Congress, I think I have been able to view my, or express my views quite freely in public, in private. I think there is a certain level of influence that all of us have. And I think it's gratifying to some extent that people do listen, not every time, but they do listen, and you have some impact on party politics, on the country's politics. And I am deeply concerned about the direction India is headed in. I'm very, very concerned. I think Dr. Rajan obviously was very forthright in his views, but to some extent a little diplomatic, because he is, after all, at a political party's kind of event. I am very concerned, and I think because of AIPC, in some ways, I see this as a platform where we can voice our opposition to the direction that RSS and BJP are taking the country in. And I'm grateful for this opportunity. And I'm grateful, by the way, to our AIPC fellows, because I say this every time that I come out of these meetings, Zoom meetings, etc., and I'm constantly amazed
And Alim will tell you, I've said it many times. I'm constantly amazed by the kind of people who have joined AIPC, who continue to associate with the Congress Party through AIPC, despite the difficulties that the Congress Party finds itself. I think the Congress Party is immensely lucky to have these people, the kind of people who we have in our audience, kind of people who are at home, who are not able to join us for a variety of reasons. The Congress Party is lucky that we have. So I do hope that the Congress Party gives more opportunities to AIPC fellows, and we will be fighting for that going forward. Thank you very much. Zarita ji, I wanted to come to you and then come to Rajiv ji. One of the most, if you remember how we met, Chairman and you and me, I think we should tell people, if you could tell people that story. And then, I think Chairman, if you remember, we had commented on Zarita ji's organizational skills. And even now, Raghuram ji was leaving and he said, you're a what? A force. Did you not say that? Yeah, I actually said that. So, ma'am, aside from the story of how we've met, if you could share with our AIPC family that, I wanted to ask you, being a female professional and a female leader, and someone who always leads from the front, most recently your work in Tripura, before that in Uttarakhand, what's that journey like? Because a lot of our female colleagues here are inspired by your story and your success. I knew you would pose something so difficult. Good evening, ladies and gentlemen. 29 and a half years, yeah, touching 30 years in politics. Sometimes it amazes me, how did I last so long? I remember it was in 2018, during the Meghalaya elections. I was told that Dr. Shashi Tharoor was coming to Shillong to campaign. And prior to that, I was in charge of Dr. Tharoor's elections for the Lok Sabha, but we only conversed over the phone. And he knew I had a weird name, but he had actually never met me. And I messaged him that, sir, I'm your, I'll be in charge for your entire tour program. And then he said, okay, so then he asked me to coordinate with Alim. So I was coordinating with Alim, and there I was, I was in Guwahati, and Dr. Tharoor arrived in Guwahati, and as any girl or as any woman would do that, I stood there with 100 red roses at the escalator to welcome Dr. Tharoor. So that was the first time how I met Dr. Tharoor. I heard his name as a girl. I grew up watching his videotapes on the Hard Talks. I still remember that used to come on BBC. And everybody used to tell me after that tour that it seems you've become a bodyguard of Dr. Tharoor, because I had such a tough time keeping everybody away from Dr. Tharoor because he was absolutely being mobbed at every step that he took. So, and that still continues, and I enjoy my job, absolutely enjoy. Besides that, yes, I had to make a comeback to Delhi. I had just lost my assembly ticket, and thank you, Dr. Tharoor. Well, I should explain by way of background that when we established AIPC, I had come up with the structure of the chairman and 4, in effect, deputies. That is 4 people for the 4 zones of the country, North, East, South, West. And North was Salman, South was Dr. Geeta Reddy, who sadly fell ill after checking in her bags yesterday at the airport and had to check out and is in hospital today. Dr. Geeta Reddy from then undivided Andhra. And then we had 2 colleagues who are no longer part of AIPC. East Zone was Gaurav Gogoi and West Zone was Milind Deora. And both of them left the organization at different times because they were given other appointments by the Congress Party. So Gaurav Gogoi became secretary in charge of West Bengal, I remember. And I remember saying to Rahul Gandhi, you didn't mention this to me. I suddenly don't have a coordinator. So it was our first anniversary celebration when this news was given to me. And immediately thinking of someone from East Zone, Zarita's name came to mind. So that's the background. Because I had traveled with her in Meghalaya and I'd seen her first-rate organizational skills, I knew she was the right person to pick that up.
Rajiv ji came a bit later because Milind was appointed to be Mumbai Pradesh Congress Committee chief a little later. And when that happened, Milind was not only at that point the deputy chairman, but also was treasurer. And we didn't have any other posts for treasurer. We wanted one of the 4 regional coordinators to be the treasurer. And I thought of Rajiv, who had extensive experience in Rajasthan politics, a long-term congressman. And he then took over as treasurer, and Salman took over as deputy. So we've had the 50% continuity in the leadership and 50% new, and these two are the fresh blood we're very happy to have in the IPC. Coming to Rajiv ji, sir, you've had a very distinguished career both in politics and business. So for many of our people here, you are the quintessential professional for progress in terms of the success you've had in both forms of your life. Can we compare that note a little bit, and can you explain to us, some of our colleagues here, what that journey has been like and what AIPC has been and what is already been? अगर आप हिंदी में कहना चाहते हैं तो हिंदी में बताइए, जैसे आप चाहें. बहुत अच्छी बात कही आपने आलिम कि एक तो एज कोई बार नहीं है. इफ यू आर ए प्रोफेशनल, आई जॉइंड दिस स्कीम आफ्टर आई कंप्लीटेड माय 60 years. So never shy, like you are not 30 years old. So for professional Congress, if you believe in the ideology of Congress party, if you believe in secularism, if you believe in equality, if you believe in social ideas what Congress party has, आपके लिए हमेशा घर खुला हुआ है. सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के संग मेरा पुराना रिश्ता है. मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिनों से. मैं 30-35 साल पहले क्षितिज यहाँ पे आया था क्योंकि मेरे को ट्राइबल आर्ट का बड़ा शौक है. और वो एज ए प्रोफेशन, जैसे आलिम ने बताया, मैं ट्राइबल आर्ट से मैंने बिजनेस शुरू करा था मेरा, ट्राइबल ज्वेलरी से. तो कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर थरूर में यहाँ पे आया, रायपुर आया. रायपुर कम्प्लीटली चेंज हो गया है. तो जो बघेल साहब कह रहे थे, वो लगता है कि डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है. मैं रायपुर से गया, यहाँ पे कोई जगह है जगदलपुर और बस्तर, और मैं आदिवासियों के बीच में 1.5-2 महीने रहा. ये हाट बाजार की बात करते हैं, मैंने हाट बाजार बहुत सारे देखे हैं. और ऐसे हाट बाजार जिसमें ट्राइबल्स ऊपर पहाड़ी से उतर के नीचे आते थे और जो सामान लेके आते थे उसका जो पुराना सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, वो सामान के बदले में कुछ हुआ के लेके आते थे, उसके बदले में चूड़ियाँ खरीदते थे, बिंदी खरीदते थे. वो भी मैंने टाइम देखा है, फोटोग्राफ से मेरे पास. और मेरे पास शायद छत्तीसगढ़ में किसी के पास इतना आदिवासी ज्वेलरी का कलेक्शन नहीं होगा. छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी का, यहाँ के बोटे और पनुआ और सब चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ. छत्तीसगढ़ से मेरा बड़ा रिश्ता है, तो मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हूँ. मैं यहाँ पे आया, आज आपने बुलाया और इतनी खातिर तीमारदारी करी है छत्तीसगढ़ के लोगों ने. मैं सबकी ओर से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई. I started my political career when I was in college in 1972. It's 50 years now. I was the Youth Congress president of Rajasthan University Youth Congress. And then there was a session in Delhi when President Ranjan Das Munshi was the chairman of Indian Youth Congress. So I attended that session in Delhi Mavlankar Hall. I was the only one, the first one from Rajasthan to become an NSUI member at that time. After these 2-day session, there was a meeting organized by Rangarajan Kumar Mangalam. He was a NSUI president. I was 17 years old. उन्होंने कहा कि आप NSUI में काम करोगे. हमने कहा तो डिमोशन है, यूथ कांग्रेस NSUI में आना पड़ेगा. बोले नहीं, NSUI नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है. बट आई वॉज वेरी यंग. मैंने 6 महीने तक उसको एक्टिवेट करा. देन गहलोत जी मुझसे 5 साल बड़े हैं, वो जोधपुर से उन्होंने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था. वो आए, वो पहले प्रेसिडेंट बने, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी बना. तो तब से NSUI और उसके बाद मैं PCC मेंबर, AICC मेंबर 6-7 बार और 3 बार मिनिस्टर रहा. लेकिन प्रोफेशनल कांग्रेस में आने के बाद मुझे सही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. क्योंकि जो सलमान कह रहे थे कि जनता के बीच में जाना, लोगों से मिलना, लेकिन हम 21वीं शताब्दी के भारत पे हैं. राजीव गांधी जी ने 21वीं शताब्दी की कल्पना करी थी. 21वीं शताब्दी की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो सेंचुरी की पॉलिटिक्स, वो 1947 या 50s की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती. थिंग्स चेंज हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर. हम
अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं, जो अभी यूके में हो रहा है वो हम देखते हैं, कैसे पार्टी के लीडर चुने जाते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, व्हाट यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी, आपके क्या थॉट हैं, कैसे टैक्स कट्स होंगे कि नहीं होंगे, प्रोग्रेस के लिए क्या आपके पास क्या थीम है, वो कौन कर सकता है? कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, एक प्रोफेशनल कर सकता है। आपकी जो ताकत है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हेन यू आर स्टडीइंग मेडिसिन और इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स होती है, चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बट यू कम इन प्रोफेशन, मोस्टली प्रोफेशनल्स दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और अभी जो पूरी कंट्री में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी की है तो वो प्रोफेशनल्स की है, क्योंकि आप में जोश भी है और आप में होश भी है, जो बहुत सारे लोगों में नहीं होता। कईयों में बहुत सारा जोश होता है, बहुत कुछ करते हैं, बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जो होश वाले लोग हैं उनको आने की आगे ज़रूरत है, क्योंकि जो देश की जो स्थिति है, मैं डॉक्टर थरूर लोगों से बात करता हूँ रोज़, हर दिन 300-400 अच्छा पैसा कमाने वाले प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स टेररिज्म है पूरे कंट्री के अंदर, द वे थिंग्स आर मूविंग, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे समय के अंदर यू आर द पीपल हु आर द रियल ओपिनियन मेकर्स। आप लोग जो कोई बात कहते हैं, आपके टीम के लोग सुनते हैं, आपके जूनियर सुनते हैं, आपके क्लाइंट सुनते हैं। आप जो बात कहते हो सोसाइटी का एक एक जना सुनता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो हमको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। और ये डॉक्टर थरूर का जो सोच था कि प्रोफेशनल कांग्रेस देश में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि हमारी जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1947 से पहले, उसमें चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी हों, सारे के सारे बहुत पढ़े लिखे विद्वान, वकील, डॉक्टर्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स, वो लोग सब राजनीति करते थे। और बाद में एक समय आया कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो राजनीति आपके लायक ही नहीं है, आपको बिना पढ़े लिखे होना जरूरी है, 8-10-12 बच्चे होने चाहिए, बड़ा सारा परिवार होना चाहिए। नहीं, सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल लोगों की सोच फर्क थी, लेकिन दुनिया बदल रही है एंड द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। जो अभी कहीं पे हो रहा है वो आपको ही सुनने को देखने को मिलता है। हमको कई बार लगता है हमारे यहाँ क्यों इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, जैसी अभी हम यूके में देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने उसके लिए आपस में पार्टी के अंदर आपस में कितनी बातचीत हो रही है, कितना ओपननेस है। तो ये जो बातें हैं, कैसे सिलेक्शन हुए, कैसे आप जगह बनाएं, कैसे यू पार्टिसिपेट करें, कैसे आप इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर काम करें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे काम करें, अगर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, अब मेरे लिए काम कर रहे हैं, सलमान सूद के लिए काम कर रहे हैं, रीता के लिए काम कर रहे हैं, या डॉक्टर थरूर के लिए काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है आज की तारीख के अंदर। लोगों के पास आपको 5 साल बाद जाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपने 5 साल के अंदर क्या करा। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमारी पार्टी ने भी, हम सब ने भी प्रोफेशनल्स का जो रोल है उसको बहुत कम माना है। खुशी की बात है कि आप अपना खर्चा करके, अपना काम छोड़ के 2 दिन के सम्मेलन के लिए यू हैव कम टू रायपुर। दिस शोज योर कमिटमेंट, दिस शोज योर लॉयल्टी, दिस शोज योर डिटर्मिनेशन। सो कीप इट अप। अब नाउ हमको आगे इस कन्वेंशन से जाने के बाद हमको एक नई ताकत के रूप के अंदर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर छाना है। आपको कोशिश करनी है कि कैसे जब पार्टी के चुनाव हो उसके अंदर भी आप भाग लें, और आने वाले समय हम सोचेंगे कि शायद कन्वेंशन 5 साल बाद हुआ है, उसकी तो बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद डॉक्टर थरूर को और पूरी टीम को। लेकिन अब ये रेगुलरली अगर 1 साल नहीं तो 2 साल के अंदर एक बार हम लोग आपस में मिले, एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। और मैं जब डॉक्टर थरूर से पहली बार मिला था, मैं तो इनसे बहुत प्रभावित था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि जिस दिन भी आप कोई जिम्मेदारी लेंगे तो मुझे आप जिम्मेदारी दे देना, क्योंकि मैं उस वक्त मैं बड़ा डबल माइंडेड था, मेरे पास बहुत सारा काम था। आई वॉज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था 14 ईयर्स से, 7 बार पीसीसी मेंबर रहा, 6 बार एआईसीसी मेंबर रहा, मिनिस्टर रहा। लेकिन तब भी मैंने कहा कि आप मुझे जो जिम्मेदारी देंगे, आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और अभी भी मेरे में तो पैशन है
कि मुझे बुलाएं तो मैं रात को 12 बजे पैदल चल के भी दिल्ली जा सकता हूँ। तो बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए और लीडरशिप के प्रति हमारी ये सोच ऐसी होनी चाहिए। जी आलम। मैं आपके साथ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी that so when I joined politics I was just 17 and I started from the booth level. So to all the women here, I think you want a career in politics, AIPC cannot be a better launching ground for you. I mean, nothing better than AIPC. And AIPC does know how to recognize talent. I should tell you this. And I had the opportunity to be in charge of 13 states. That's the maximum in the entire AIPC. And compared to all my other colleagues. And I've traveled all my states, and believe me, the scope of work and the people that I've met, I cannot explain to you how open they were when they actually understood what All India Professionals Congress is actually about. And through the work that I did in All India Professionals Congress and over the last 4 years that I've been with All India Professionals Congress, and I thank the entire team, especially Dr. Tharoor, for allowing me to be a part of this family, that I too got promoted. But I'm still staying along with the family till the family decides to send me off. But so far, I'm still stuck with you. Thank you very much. We're going to take some questions. Anyone, any final comments? No? Okay. So we've got the mics here. Okay, can we get the lights on, please? Lighting? Yeah, okay, so we've got quite a few hands. So, right, let's first start over here because these hands were up, right? First, you, sir, introduce yourself and your name, and then we'll go to you. We'll take a couple Also of tell questions. us where you're from, huh? Which AIPC chapter. Mike. Yeah, go ahead. Sir, myself, Tarun Kumar Sonwani, and I am not a member of AIPC. I am just a student and working as well. So मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे सर बोल रहे थे, राजीव सर थोड़ी देर पहले, और शशि सर से भी है कि सर जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे जितने भी मिनिस्टर थे, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जांपल ले लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, सभी के सभी बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ाई की थी और वो वेल एजुकेटेड थे। तो सर आपको क्या नहीं लगता कि अभी जो मिनिस्टर्स हैं तो उनमें सर ऐसा कुछ होना चाहिए कि एजुकेशन को ही ज्यादा महत्व दिया जाए? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा एजुकेटेड है वो सामने आए, रेदर देन जो कम एजुकेटेड है उनके लिए भी रखा जाए। बट ऐसा है कि क्योंकि उस समय देश की जो हालात थी 1947 में, हम टोटली बैंकरप्ट थे, अंग्रेजों ने जो हमको लूटा वो तो लूटा ही, बट हमारी स्थिति नहीं थी कि हम देश चला सके, बट हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने देश चलाया। तो आपको नहीं लगता सर कि एजुकेटेड लोग ज्यादा आए रेदर देन ऐसे लोग आए जिनके 10 बच्चे 12 बच्चे जो सर बोल रहे थे, या फिर उन लोग आए? तो मैं ये आंसर चाहूंगा शशि सर से और राजीव सर। Thank you. Next over there, right next to. You get the government you deserve. बोलिए। तो नमस्कार सर। क्या होता है कि हम जैसे लोगों को चुनते हैं तो पहले तो हमको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हों। स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था वो इलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, उसमें जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ों का जो मुकाबला करना है उनको उनकी बुद्धि से हराना पड़ेगा। आपको एक मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी पूरे देश के अंदर। आपको मालूम है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस पर गए, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी ने जो बातें करी, जो लिखा, जो अखबार उस वक्त छपे। मैं साउथ अफ्रीका जाके आया, मैंने प्रिंटिंग प्रेस देखी जहाँ पे गांधी जी होते थे, फिनिक्स उनके इलाके के अंदर। तो जो उस वक्त जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में आए वो स्व प्रेरित थे, वो सेल्फ मोटिवेटेड थे कि हमको जाके इस देश को आज़ाद कराना है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम बना, उसके अंदर बहुत सारी भीड़ चाल हो गई और बहुत सारा मोमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी की जगह जो आप बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा, उन नेताओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप पॉलिटिक्स सुधरेगी।
आप जब इस बात को आप लिखोगे, आप बोलोगे, निश्चित रूप से समय आ रहा है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई है ये आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि इस देश को हर साल पीछे लेके जा रही है जो इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो रूढ़िवादी तरीका है, जिस तरह से डिवाइड कर रहे हैं वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर। हमको लग नहीं रहा कि हम 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रहे हैं, हम हर चीज में पीछे जाते जा रहे हैं। ऐसे समय के अंदर कांग्रेस के हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए, और आपसे बेहतर कोई उसके लिए नहीं है। चेयरमैन, देखिए, बात ये भी है कि 1945 के चुनाव तक हमारी इलेक्ट्रेट बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि ब्रिटिश के नियम के अनुसार सिर्फ एजुकेटेड लोग और प्रॉपर्टी ओनिंग लोग को वोट दिया जाता था, और हमारे देश में करीब 15-16% पढ़े लिखे थे हमारे देश में, तो एजुकेटेड लोग बहुत कम थे। 1945 में हमारी पॉपुलेशन आंकड़े तो मेरे ख्याल में 300 मिलियन, 30 करोड़ थे, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ को वोट दिया गया, बाकी सब जनता के पास वोट भी नहीं था। तो नेचुरली जब इलेक्टोरेट भी एजुकेटेड हो तो सारे नेताओं भी एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, और जो राजीव जी ने कहा बिल्कुल सही है। हमने जो संविधान में लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सबको वोट मिलना चाहिए अगर वो पढ़े लिखे हो या नहीं, तो नेचुरली कॉम्पोजिशन बदल गए, और सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं तो राजनीति में, अगर आपको साधारण आम आदमी का वोट चाहिए, आप खुद उस बैकग्राउंड से आए, तो आपको वोट मिलना शायद ज्यादा इजी था। तो इसलिए हमारे लोकतंत्र में हमारे क्लास कॉम्पोजिशन, एजुकेटेड लोगों की कॉम्पोजिशन भी बदल गए, और एक्चुअली ये हुआ कि सिर्फ वो लोग थे जो ये स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए थे, उनके परिवार के एजुकेटेड लोग राजनीति में कंटिन्यू करके चले, और बाकी सारे नए एजुकेटेड लोग वो अलग रहना पसंद किया। कहता है कि ये हमारे इलाका नहीं, हमारा फील्ड नहीं है, उन लोगों को छोड़ दो। मुझे अभी भी याद है जब मैं पॉलिटिक्स में जरा सा इंटरेस्ट ले रहा था, एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में भी राजीव जी की जैसे मैं स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट था, लेकिन मेरे पिताजी और उनके दोस्त क्या कहते थे, देखिए तुम तो क्लास में फर्स्ट हो, हर परीक्षा में अच्छे मार्क लेते हो, तुम ये समझ लो राजनीति सिर्फ उनके लिए है जो परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, तुम परीक्षा पास करते हो, जाके कुछ अच्छा काम ले लो। तो ये एटीट्यूड जो हमारे एजुकेटेड क्लासेस में थे, इसको बदलना छोटी सी बात नहीं है, लेकिन अभी ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे हैं। और एक चीज और है कि जब कोई भी राजनेता बनता है ना, उसका बेटा को पहले वो अच्छा एजुकेशन देता है। खुद उनके पास शायद एजुकेशन नहीं होता, शिक्षित तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, फिर भी उनके बेटे, अब मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, मैं किसी के नाम को लेके किसी का अपमान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि जो अभी 70-80 साल के कई नेता हैं जो बिल्कुल अनपढ़ नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा पढ़ाई नहीं की हर पार्टी में, लेकिन उनके बेटे सब देखिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, शायद विदेश में भी पढ़े हैं, और वो बेटे जब राजनीति में आते हैं ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग अ मोर एजुकेटेड सेक्शन इनटू पॉलिटिक्स। बस यही हमारा डिटेल जवाब है आपका कमेंट के लिए। धन्यवाद। हम 2 या 3 सवाल एक टाइम लेंगे, तो सर पहले आप, फिर उसके बाद आप, और फिर यहाँ बोलिए सर, आपका शुभ नाम और आपका। सर जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह फिर उसके बाद। राजपुरोहित है, मैं जोधपुर AIPC चैप्टर से आया हूँ, और मेरा एक सवाल थरूर साहब से और अरोड़ा साहब से है कि जैसे आज का सेशन इतना अच्छा हुआ है, ये इसमें हमारी भागीदारी था कि हमारी भी इंटरेक्शन आप सबके साथ हुई, ऐसा अगर कल कोई सेशन आप करवा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग इतनी दूर से आए तो हमें आपसे पर्सनल इंटरेक्शन होकर के हाँ, और आपसे हम सुनना चाहते हैं। इस सेशन के बाद सारे सेशंस में आपको ज्यादा मौका मिलेगा। नेक्स्ट सेशन एक्चुअली हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सारे आएंगे, करीब 15-20 स्टेट प्रेसिडेंट्स होंगे मंच पे, और आप लोग उनके साथ भी, उनसे भी सुनेंगे और उनको भी कमेंट दे सकते हैं, और कल भी ऐसे बहुत सेशन। थैंक यू सर। जी सर, आपके पास जो माइक है, बोलिए बोलिए। माइक माइक वो वाला माइक दे दीजिए, वो वाला माइक। चलो चलो। Good evening, everyone. My name is Rajat Abhinav, and I have come from Bhopal chapter.
I want to know how AIPC appoints a state president. And my second question is, what was the need for AIPC to include us in Congress party? I think last year I got a message via mail that you can join Congress. So this is these two questions. So would you like to take the first one, sir? Yeah, I mean, on the question of appointments, I do want to stress, we want to move towards increasing democratization and have people elected. But in the initial stage, in consultation with the Congress party leadership, it was decided that we should appoint. And the reason was very simply, we have to get the organization established. जैसे मैंने आज सुबह भी कहा था कि एक नया संगठन एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्थापित करना छोटी सी बात नहीं है और मेरे ख्याल में अगर ऐसे ये शुरुआत में कंट्रोल नहीं हुआ होता we would have had a problem. तो इसलिए all the state presidents and indeed all the coordinators are appointed. In the case of the coordinators, they're formally appointed by the Congress president on my recommendation. And in the case of the state presidents, they're appointed by the national executive and we sign the appointments together. One rule that we have insisted upon, which no other department had before us, is that of the three principal office bearers, the same model that we have nationally and in the state level and in the chapter level is president, vice president, secretary. We said of the three, at least one must be a woman. And that is something we have stuck to, with the result that we have a very, very wide and dispersed presence of women throughout our organization, both at chapter levels and at state levels. Now, eventually, we want to move towards an election model. We are quite prepared to be ahead of the rest of the party in doing that because in our case, our membership is very clear. Every member has a number, is identified as an assigned chapter and so on. And therefore, you'll have a clear-cut electoral college when the elections come. But the party has asked me not to do it right now. Eventually, that's the way we will go and we'll get you to you. On the question of joining the Congress, strictly speaking, the Professionals Congress is a department of the Congress. So in any case, by joining AIPC, you have been assimilated into the Congress. But I think what the offer was, Alim, if I'm not mistaken, was to become a formal member. When you become a fellow of the AIPC, you're associating with the Indian National Congress. But when you take a formal membership, you get a little Congress ID card. That makes you a formal member of the party. And the reason for this is very simple. Many of you who work with certain companies that have governmental contracts are prohibited from formally becoming members of political parties. But by affiliating, which is your democratic right, you're not taking formal membership of a party. We leave it to you to determine. Also, I need to stress this, and I cannot stress more, your fellowship with AIPC is a completely confidential transaction between you and us. There are many people who are part of AIPC, and their family doesn't even know that they're part of AIPC. They don't, because they believe very strongly in this, they have things to protect. We maintain confidentiality. It's up to you to determine if you want to broadcast your association with us or not. But we're not going to force you to do anything. I want to add a little bit on this appointments at the state leadership level. Let me just give you some examples of how things happen and how things are evolving. Election is obviously something that we would ultimately want to get to. But the evolution that I've seen is initially when we set up AIPC, we went to the state Pradesh Congress committees, sought their inputs, because ultimately, you know, at the state level, you have to work with the party infrastructure. So we would take recommendations, we would talk to maybe the general secretaries in charge, maybe the PCC presidents, because we didn't know people at the state level, we were just setting things up. Over time, what has happened is that people have risen through the ranks to basically take on leadership roles. For example, I mean, Delhi seems like an obvious one where Amitabh was a chapter leader and ultimately became president of Delhi. And so what we're trying to do is we're trying to promote from within. So that if you do good work, that should be recognized. We don't always have to go to the PCC chief then or the general secretary and say, can we make this person the president, this person the vice president or the secretary? Because you are then our own people, you're demonstrated that you're doing a good job and you take on those leadership positions. So I think that is what we're trying to do. It doesn't always work that way. Sometimes what happens is that succession takes place because the party leadership tells us that there is a gap and we need to fill it.
and we have to accommodate the party. But for the most part, I think regional coordinators have the flexibility to say that, look, we have a vacancy in the state leadership. We have chapter leaders who are performing really well, and why don't we just promote them? And I think at that point, we can independently say, no matter what the PCC chief says or anybody else says, we can say that this person's done a good job, is an AIPC person, and will be promoted from within. Yeah, I do want to stress the appointments are made by AIPC and not by the PCC. The PCC's input is welcome, but no PCC chief has ever allowed a veto on our appointments. And I'm proud to say I've personally appointed some people against the wishes of the then PCC chief, and they are still heading the AIPC state chapters, and the PCC chief is long gone. So I'm not worried about standing up for AIPC's institutional integrity. Can we take a few questions from here, then from here, and we'll come back here. So can I just see some hands? Right. Sorry, once. Rukshmani ji, okay, you've got the mic. Go ahead. After you, we'll go to ma'am here, and then the gentleman here. Yeah, go ahead. मेरा नाम रुक्ष्मणी कुमारी है और मैं राजस्थान स्टेट की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर थरूर से है। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्रेसिडेंट की जगह दी। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी बैकग्राउंड से आती हूँ, पर मेरे इन लॉज की फैमिली में कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं था सर। पर मेरा सवाल है सर कि 2023 में राजस्थान में इलेक्शन है और मेरी इच्छा है कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ूं। तो क्या सर एआईपीसी के जो लीडर्स और मेंबर्स और फेलोज हैं, क्या एआईसीसी या आप लोग कोई हमारा एक कोटा है, जैसे यूथ कांग्रेस का, एनयूएसवाई का, क्यों नहीं सर हमारा भी कोई कोटा हो? तो मेरा निवेदन है कि सर आप अध्यक्ष जी को लेटर लिखें कि हमारा भी एआईपीसी का कोटा होना चाहिए, वेरिफिकेशन करें, सर्वे कराएं, सभी तरह की जो होता है वो करें, बट कुछ ना कुछ परसेंटेज एआईपीसी लीडर्स के लिए होना चाहिए, फेलोज के लिए, कि हम भी नेतृत्व कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर यहाँ लोग होंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं सर। तो आपका क्या जवाब रहेगा सर? Can I just take this other question as well from the... Sir, this is a common question actually. On behalf of all the state presidents. You can associate. You can associate. Ma'am, please introduce yourself. All those who associate with the mic. You must hold it closer. हाथ ऊपर करो. Okay. So this question is not... Go ahead, ma'am. Yes. Hi, good evening. This is Sangeeta from Tamil Nadu. I'm the state secretary. Thank you all here, and thank you, fellow people. All right, my question is, I'm looking at how do we network within AIPC, because that's something I've not found happening at all. I mean, for me, it is completely a new set of people here, though I've been an AIPC member for like 6 months only. But that 6 months is a big period, and we are looking at the national election coming up in a year and a half, and we don't have much time. So I'm looking at, networking with people, like we have migrant workers working all over the country. Like I have so many people in Tamil Nadu. When we had COVID, we didn't know whom to reach out to. We really didn't know that we had a counterpart, say in Manipur or Mizoram or some place where we could call them to see how we can help the families who work here. So this is something I really feel that as AIPC professionals, we need to be networking really, really hard, and to, bring it up to the people to say that, hey, we are here as professionals to help you guys. Thank you. I think that's an excellent point too. Very Rukmini ji ki prashna, and many of you are interested, so I'll answer in English as well. The truth is that there is no quota. There is no established percentage of, as very often there is for youth Congress candidates, where in many state elections it has been said that 10% or 15%, whatever, will be people from that background. We don't have that in AIPC. But whenever AIPC serving colleagues have expressed interest, we have supported them with letters to the Congress president as recently as some of the state elections of last year. But I do want to say that we have not always succeeded. Very few of our people have made it so far. So I'm very happy to convey the wishes of all of you. But there are two factors to be borne in mind. One is, as Rukshmani ji herself said, your own
acceptability and popularity, for example, in local surveys and so on. And the second factor is, frankly, how well you're known within the party. Because even if I write a recommendation letter to the Congress president for Miss X, and then Miss X, they ask the PCC president or the screening committee chair, and that person says, never heard of her, that'll be the end of Miss X for a candidacy. So you have to understand that while you are working for AIPC and within AIPC, if your ambition and desire is to be a Congress party candidate, I can tell you that you will also need to cultivate good relations with the parent party and party leaders. And I say this because I know in this room are a number of people whom I have recommended who did not get tickets. And therefore, the reality is that we can't guarantee anything. All we can tell you is our goodwill you can take for granted, but the party's decision always takes into account various factors, including your winnability. डॉक्टर थरूर की बात का 2 लाइन में है, मतलब खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो खुद को इतना मजबूत करो आप कि देने वाला टिकट दे आपको आगे बढ़ के. बिल्कुल. Just I want to ask you, how many people in the room sitting on that side have contested an election? There are a few hands. You see, it's not that nobody, people have contested, but most people have not, and many people are interested. One way to really strengthen our opportunities is to actually have something called an election academy, where AIPC can facilitate some training from those who have won, in other places, so that you understand what goes into fighting elections. Because fighting elections, trust me, I've fought an election. It's after fighting for 2 years, basically 2-year campaign in Kashmir, going through almost 50 villages, so many events. It's a very big deal, and I think we need training, frankly, and I think that would also improve our chances. And I think this academy idea, I met this guy who beat the Chief Minister of Uttarakhand, right? Young guy. We met him at Devendra Yadav's residence. His name is Bhuvan Kapre. Yes, wonderful guy. We could get those kinds of people. Abhishek Dutt in Delhi keeps winning his corporate municipal corporation elections. Very good people. There's a lot to learn. Shashi Tharoor keeps winning Shashi Tharoor Trivandrum. keeps winning his elections. So, I think there's a lot to learn, and I think that would also help. I think it won't just be our letters, but I think if we have a totality of effort, then it might work. Also, before you get a ticket, there's still other things you can do. Many AIPC people have been accepted as spokespeople, as television panelists. Many people have been asked to contribute to some of the research findings of the AICC research department. So you can certainly, while being in AIPC, help AICC and INC with some of their work and their inputs. And if you want to volunteer for that, happily do so. We have some of our AIPC presidents are in fact official spokespeople of the parent party. As a matter of fact, sir, I have been as a national media panelist from AIPC. I have also been the convener of the National War Room 2014, 2018, right? 19. And I have been in charge of war rooms in most of the election-going states, be it Assam, be it Bihar, be it Mizoram, be it many other states. So I think AIPC does give you an opportunity. You just have to know where to find it. And with a background like AIPC, I think we have a very, very long way to go. You just have to know, where to just put that right pin, and then and you'll get it. And just a second, there are many opportunities that are going to open up in the communications department. So the new because everybody in the Udaipur Chintan Shivir basically felt that Congress's communication strategy was not working. So there's a total revamp of the communications department, and they're going to be looking for many spokespersons, including in regional languages. Frankly, you people have very good opportunities if you want to do that. That kind of work and that kind of party work, organizational work is very important, and that can actually elevate your profiles. And that could also be take you closer to the tickets. So we've got 2 people with mics. If you can please ask your name and your question.
शशि थरूर साहब, मंच में बैठे सभी महानुभावगण, मैं प्रमोद तिवारी हूँ। छात्र राजनीति से हम लोग ऊपर आए और कांग्रेस पार्टी के डेडिकेटेड होल टाइम काम करने वाले वर्कर हैं हम लोग। सारा दिन सुनने के बाद ये समझ में आया, सुबह मैं जब घर से चला तो मुझे आपका कार्यक्रम पहली बार अटेंड किया, आपसे मुलाकात तो बहुत बार हुई। तो क्षितिज जी के बारे में भी हम सोचते रहे कि स्टेट के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और क्या खड़ा हुआ है और कौन से विचारों पर बात होगी। रघुराजन साहब को सुनना है, कुछ उनसे पूछना है। एक बात 6 घंटे लगभग हो गया और आप लोगों से दूर हटने का मन नहीं हो रहा है। सुनने की जिज्ञासा इतनी गहरी है। आजादी की लड़ाई हुई और आजादी की लड़ाई में फ्री ऑफ कास्ट अपना तन मन धन सब कुछ लेकर हमारे पुरखों ने, आप सभी के पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी, देश आजाद किया। उस वक्त भी, अभी थोड़ी देर पहली बात आई कि आजादी की लड़ाई में किसी ने फंड दिया नहीं, सबने अपना अपना लगाया। जो जितना कम लगा सकता था, कोई ज्यादा लगा सकता था। कांग्रेस पार्टी का डिमोलाइजेशन, लगातार ऑन एंड कांग्रेस पार्टी को उखाड़ना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में दुष्प्रचार करना, ये पार्टी के सेल के अंदर की चीजें लड़ नहीं पा रही। आई थिंक जैसे मैं बोलता हूं, बिहार से हम उखड़े लौटे नहीं, राजस्थान से गए थे आज आए, पंजाब में थे चले गए, उत्तर प्रदेश में हम आ ही नहीं पाते, गठबंधन की सीढ़ी हम चढ़ते हैं वापस लौट जाते हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, छात्र राजनीति से निकला हुआ नौजवान और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया हुआ बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भट्टी में तपा हुआ है, आग में। वो सारे लोग, आई थिंक मैं समझता हूं, वो बैठे हुए हैं और थरूर साहब उन लोगों को आपने जोड़ा हुआ है। तो इस सेल से हमको बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हम लोग तो बूथ लेवल का वर्कर तैयार करके 15 साल के बाद आज छत्तीसगढ़ में लौटे। आपका प्रश्न और पूछो प्रमोद जी। मेरा प्रश्न इसी में है। मैं जो बोल रहा हूं साहब, उसी में प्रश्न है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो ये कहने जा रहा हूं कि आज घर से हम निकले हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहेगा ही, और ये एक अच्छी मनोभावना है कि आपके कोई कोटा हो, बहन जी ने कहा जैसे कोई कोटा हो या आपका रिकमेंडेशन हो, आपने कहा खुद को इतना बुलंद कर कि खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। तो आपका ये जो मंच है और आपका जो मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन हमें वहां तक ले जाए। और ये सारे लोग अपना खुद का पैसा लगाकर, इंक्लूडिंग मैं भी शामिल हूं, हम अपना खुद का पैसा लगाकर ही पार्टी का काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी चाहेंगे कि फ्रीडम फाइटर के घर में कि ये बदलाव कैसे आया। हमने देखा कई फ्रीडम फाइटर के घरों में, या कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी, वो उनके घर में खाना नहीं बचा। तो आज की जो पीढ़ी है, जैसा थरूर साहब ने कहा, चेंज आ गया। तो आज की पीढ़ी ये चाहती है कि मैं अगर कुछ करने जा रहा हूं या जा रही हूं तो उसके बदले में आने वाली पीढ़ी मुझे याद करे, वो मुझे मिल जाए। बस बहुत अच्छी बात कही आपने। आप ये जो डॉक्टर थरूर ने जो पहले आपको बोला, उनका उसका एक मकसद ये भी था कि अभी AIPC AICC का एक डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और अगर एक डिपार्टमेंट को कोई कोटा मिलता है तो सबके ऊपर लागू होता है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और जो हम लोग, जो आप जो बात करें, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जिस दिन AIPC की ताकत, आज 10,000 लोग हैं पूरे देश के अंदर, जब इलाकों में पहुंच जाएगी, आज यूथ कांग्रेस की, तो उसकी बात अलग होती है निश्चित रूप से। और डॉक्टर थरूर से ज्यादा बड़ा कोई वकील हमको मिल नहीं सकता। ये लिखते ही नहीं है, बड़े जोर दे के रिकमेंड करते हैं, किसी का नाम रिकमेंड करते हैं। तो मैंने इनके भेजे हुए लेटर्स देखे हैं, और ये जरूरत पड़ती है तो मिसेस गांधी से, राहुल गांधी से खुद बात भी करते हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के संग करेंगे जरिता तो सबके संग करना पड़ेगा। शायद ये कारण होगा। थैंक यू। एक चीज मुझे पता है कि अब रघुराम राजन से भी प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन आपको पता है कि वो सेशन जरा लंबा हो गया और इसलिए हमें
कैंसिल करना पड़ा आपका क्वेश्चन, लेकिन अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे बोले, धन्यवाद. We'll take one question. I have a question. I'm sorry. No, I'm no. sorry, Alim. We'll take Okay. a question from here and then No, from you. sir. I was the first one who put my hand up. Okay, Just a so I minute, have the sir. right. Sir, I came sir. all the way from Bangalore to ask this question. Okay. No, 1 minute. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Okay, can we Every- have both the questions? A little Ma'am, bit. ma'am, Not take much time, please. ma'am, he raised his hand Oh, first and no. then you. No, okay, fine, no issues, Okay, no ma'am. issues, please, Okay, ma'am. please. Okay. So my question is simple. Gandhi knew how to get us independence, but Nehru knew what kind of India he wants to build, right? Gandhi really didn't know. Today, Raghuram Rajan told his vision for an India, probably after the next independence, right? Which we have to get. But we are not discussing how to get there. Otherwise, it just remains a dream. So I believe AIPC's role is to come up with a strategy, probably, and work as a think tank for the party to bring it back to power, right? But what is not clear to me is that what is the mandate of AIPC? Is it going to be a service organization like Sevadal, or is it going to be like a think tank? If it is think tank, how are we going to collect all the ideas, refine it, and get there? Get to power, right? Get back to power. Is there any effort towards that going to happen? Thank you. Your question, ma'am. And I'd like to Thank answer you, that Honorable question. Dias. My question is to Dr. Shashi Tharoor and Professor Shilpa Dikshit Sharma from the Agra chapter, Uttar Pradesh, UP West. I second what Rukshmani Kumari ji said, that women who are really interested in coming into politics, they need to be supported and thrusted upon by the AIPC, especially by you, sir. Because, once when you're a member of the AIPC, the people usually do not look upon to you as though you're really into politics. But me being a professor, if I really want to leave something and I want to come into active politics, I'm contributing my little bit to whatever I can to the AICC. I'm writing for Congress Sandesh. I am into the AICC training department a little bit, also trying to learn the ideology under Sachin Rao, sir. But then, there is something that is missing out here when you're a member of the AIPC as a female, and when you stand up to speak and they say you speak somewhat like Dr. Shashi Tharoor. So, some kind of a complex that develops, which does not allow people like me to come up there. So a little bit of trust from all you gentlemen, if it comes up, it really would be a great impetus to the women force in politics. Thank you so much. Thank you very much. Well, I'm delighted by that. I think this is something we very much want to do. And there's obviously the channel through your own state heads to get to, if I don't know you, haven't had direct contact with you, at least that way I can get to know about your work and contributions and give you the support you need. As for this larger question, it's a tough question to answer, and I'll tell you why. When we established AIPC, the mandate that was given was for us to be a bridge with the professional community of the country. That was it. There was no thing beyond that. Then as we started establishing that bridge, creating our units and getting them to work, a number of good things and a number of bad things happened. I haven't discussed the bad things, but one of the bad things is we started off with the assumption that AIPC would kind of be the Rotary Club of the Congress Party. You know how the Rotary Club works. You have individual chapters, various professions are represented in each chapter, but basically thereafter, within the broad brush mandate of the Rotary, they all do what they want. They are supposed to take their own initiatives, conduct their own activities, hold their own conferences. And when we announced to AIPC that's what should happen, we discovered some people enjoyed that freedom and did very interesting things on their own initiative. Some sat on their hands and just waited to hear from headquarters as to what they should do. So as a result, we had a very uneven development. In some cases, for example, I happen to be a member of the Trivandrum chapter, just an ordinary member. And I can tell you that they meet a minimum of once a month, sometimes twice a month, every single month since they were established. Now, that is not true of every chapter in the country. But when I look at some of the other states, I hear of states where neither the local chapters nor the state chapter has held any meeting for a year. Now, that is no good, because then obviously how do you create an effectiveness for your organization? All of these things mean that it has been difficult to create a uniform pattern. We finally become a little more directive from headquarters than we used to be in order to get people into more activities, encouraging the states. I really thought
when I first created the organization with the title Regional Coordinator, that all they would have to do is to coordinate, because all the work would be actually done locally. In practice, the regional coordinators have had to be much more hands-on, much more directive, chasing after state presidents, making sure chapters are active, and that has become a very significant development. The think tank concept is always there, but there is already an official think tank at AICC, and that is the AICC Research Department. Very often, some of the work that AIPC individual chapters has done has taken on the quality of think tank efforts. I mentioned some examples in my speech this morning. The AIPC Delhi did a very good study on air pollution in Delhi. AIPC Tamil Nadu did an extremely good work after the impact of demonetization and GST on the textile mill workers in Tirupur, with extensive on-the-ground research and thing. We've had studies. AIPC Kerala did a remarkable survey of engineering graduates and established something that many of the employers' organizations have been telling us, that the majority of engineering graduates are in professions that don't require an engineering degree. So either what they're studying is not relevant, or what they're studying is not what the marketplace needs. These are all very important insights. And all these three examples I gave, I have used in my political interventions in Parliament, either in speeches or in question hour or in 0 hour. The party in turn has taken these inputs and formed, when they give policy guidance to our MPs speaking in Parliament and so on. So to that degree, we have been able to contribute as a think tank, but that's not the only thing we've done. So when during COVID, I have Rajivji going around distributing essential supplies, water and so on to hospitals. When I have another AIPC in Kerala conducting a drive to collect infrared thermometers and then distributing them to various clinics. Where during floods in Kerala, when we had various AIPC chapters sending relief, that's not think tank work. So you can argue that we are a think tank and also a service organization. We are a professional body, but we're also doing social service type work. We are doing reflective things. We're also doing discussions. In fact, a lot of the interesting things that happened during COVID, as I mentioned this morning, took place online, and professionals were much better and more adept at using the online space than many other Congress departments. Many other departments were largely absent or silent until in the second year of COVID, the Youth Congress stepped out on the streets with their excellent oxygen campaign. But till then, I would say the most active department of the Congress was the AIPC throughout the first year of COVID, because we did so much online. There were so many good discussions. Hello Doctor was mentioned this morning, so the doctor's medical helpline that I mentioned. Yes, we did studies on the impact of COVID on tourism, on different sectors, and submitted them. So we're doing this kind of work, don't get me wrong, but it cannot be typecast as just being a think tank or just being a social delivery organization. We've done both. Finally, on the question of how to win elections, that is not our department. And I should make that very clear so that no one has any misconceptions. Professionals are adept at understanding their fields of expertise. They can analyze certain policies. They can, for example, take any government policy. Nothing is preventing a chapter. You don't even have to ask us at headquarters. If a chapter says there is a government policy that has just been announced, let's say free kitchens, let's say PM Kisan Yojana, whatever, and we want to study the impact in our constituency or our district or our city, whatever it may be, you are free to do that. That will be a very valuable input, no problem. But that is up to you as an initiative. We're not expecting anybody in the AIPC to be the top available expert on how to fight an election. That's not supposed to be our strength. Maybe because we have professional qualities to offer, the party might invite us to fight an election. But how to win the election is not AIPC's job. That's the organization's job, and is all the people with the experience of decades of fighting elections that the Congress relies on. So even if we started giving them a strategy paper, at best it will be an input into their reflection. We will not be the ones determining how to fight, because that's not supposed to be our strength. Our strength is to channel ideas by professionals, to give professionals an opportunity to be in contact with politicians, and to bring the two together. But just to make it very clear, we do want Congress to come back to power, but our job is more to have a good idea of what to do once they manage to come back to power.
rather than saying we will tell you how to come to power, because they will only take seriously people who have experience of fighting and winning elections over many years. Can I just add to that one point? First and foremost, thank you to you and everyone else who has traveled a great distance to be here. We appreciate it. All of the above. Zarita ji, what were you doing in Uttarakhand? You want me to elaborate that? Just in one line, what was your responsibility in Uttarakhand? My responsibility in Uttarakhand was as media in charge, AICC, to coordinate media. Rukshmani ji, what were you doing in the Uttarakhand election? Manifesto? Yeah. Shitish bhai, what were you doing in the Uttarakhand? Manifesto? Okay. AIPC's coherent, identifiable contribution. Guys, I am also a fellow of AIPC. I also have to go and argue and fight and push and pull and whatever it is to get space for us. The undisputable truth is that the AIPC's coherent value add to the Congress party is manifestos. Whether it is the 2019 manifesto, whether it's the Karnataka manifesto, whether it's the Goa manifesto, West Bengal, Uttarakhand, Rajasthan, Chhattisgarh, n number of manifestos. It's a coherent document. You can physically hold it in your hand. You say you vote for Congress because of what is written in this document. You vote for us, we're going to do this for you. This document is what brings governments to power to a certain extent. That is an identifiable thing you can hold in your hand, you can read, and only a professional who's passionate can do it. Because you know what professionals have to do? They have to take time off work, go off to far off places, sit down and talk to people, and the only thing motivating them to do it is their passion. The party recognizes this. Like this, we have to identify specific deliverable activities to create more opportunities for our fellows. Guys, we're going to take 6 more questions. Let me finish. We're going to take 2 questions from here, 2 questions from here, and 2 questions from here. I know many people have questions. We also have sessions tomorrow where you will have members of the National Executive where you can ask. So please don't feel that you did not get to ask a question. The young gentleman here first, your question, and then Anis Saab here. This gentleman here, and that gentleman back there. And I'll come to this group in 1 second. Sir, ask your question. Here. The young guy, he's been standing. Good evening, sir. Yes, sorry, go ahead. Good evening, sir. So my name is Prafuldev Sahu. I am currently 18 years old. So first of all, very excited to meet you. Really impressed by your vocabulary. And I have listened to your speech, which you, in the UN, you made a speech. I was really impressed by that. And so, thank you. So my question to you is, like the majority people of our age group, they are not that much into politics. Like, honestly speaking, they either talk about cricket or Bollywood or rap songs, like stuff like that. And so what can be done to create awareness? As we know, the majority population of this country is the youth, and we are full of energy, we are full of enthusiasm, and no one discusses about politics, at least in our age group. So thank you. I think you're absolutely right. Mind you, I'm also interested in cricket, and I'm sure there are members of AIPC who are interested in Bollywood. But the truth is that we also have a political passion, or we wouldn't be doing what we're doing. I remember the first time that a student, a class 12 girl, said this to me: "I'm not interested in politics." I looked at her and said, "The problem is politics is interested in you." Suna, that's the point, that politicians are making decisions which will affect your life, whether you're interested or not. How do you know what your choices are which university you'll go to, what subjects you'll study, what kind of jobs there'll be? Politicians have made all those decisions for you. It's politicians who've decided that there can be private universities, or that there should be more resources given to your government university, if that's the one you're going to. If you want to influence these policies, you better care. It's politicians who've decided whether to open up the economy or close it, and therefore which opportunities exist in the marketplace. You know that from the 90s, when liberalization came, a whole bunch of new jobs came into being in India that didn't exist before that, because we became participants in globalization instead of being a protected economy. So politicians are constantly making decisions that affect your daily lives. How can you be uninterested? Surely you must have, what is politics? Politics
is an effort to define the nature of a better society for your country and to work to bringing about that better society. So you should demand of your politicians that they have ideas. What kind of India do they want? You should demand of your politicians that they have policies. How will they bring about that kind of India? What kind of, are they pro-capital? Are they anti-capital? Do they want business to be free? Do they want the government to control everything? Do they want educational institutions to have autonomy? Do they want to tell every university what to do? All of these things affect your life. So you should have an idea what politicians stand for and vote for people whose policies you believe, you agree with, or are in your interest. That's why you should be interested in politics. And frankly, every time I get a chance to talk to young people, this is what I tell them. Thank you. Hello, Dr. Tharoor. I'm Vandana Mishra. I am the state vice president from Himachal. Hi, Vandana. And I'm an advocate by profession. And initially, I was really not in for joining AIPC, like one advocate earlier also, I think, said, when Dr. Rajan was there, because I've never identified politics and the work that I do really. My question to you is, what prompted me to get into politics was that I saw this huge surge of right wing, not only in our country, but throughout the world. And I, as a professional, did not like this whole trend. And I think this is my question to you for your party at large, that I think one thing is that we need to have a very robust, strong framework to break the fascistic mold that we are being pushed into and forced into. And how is it and the second question to you, sir, is how do you think that we as AIPC professionals in our whatever field that we are in, I'm not primarily politically inclined, but I do a lot of public interest litigations and I try to contribute in that way. How do you think we can break the fascistic mold? Because this is very disturbing, and this whole trend of how the direction in which our nation is going is very disturbing. So we as professionals, how do you think we can contribute to break that, sir? Thank you. Well, I think you have the answer in your question already, which is that we must each contribute in our own fields to begin with. In your case, if you're helping people fighting unjust cases foisted upon them and so on, you're already doing a great job. In my case, for example, my other life is as a writer, and I found that most of my books in recent years have dealt with these themes of democracy, of nationalism, a book on the Prime Minister and his style of governance. Each of these things are ways of trying to open the eyes of readers to what exactly is wrong. Even my book called Why I'm a Hindu actually is an explanation of the kind of Hinduism that can resist the Hindutva approach of the BJP and that challenges the claims of the Hindutva movement. So all of these things are things that I've tried to do as a writer and an intellectual. I hope that other members of AIPC in their own fields can make a contribution. You can talk to your friends, you can talk to your co-workers, you can enlighten people. When you find people are complacently going along with something, you can challenge their assumptions. Do you realize what this means? When lies are being circulated on WhatsApp groups, you should risk the frustration of being challenged by your friends by saying this is simply false. Don't believe it. You're being snowed under. I mean, how many of you have received WhatsApp forwards assuring you that the Gandhi family are really Muslim? I mean, what is all this? But this is going around, and it's going around very malicious and deliberately because that's part of a political tactic. So we need to stand up in our own circles, in our own family lives, and our own professional lives, and do the best we can in our own fields. I think what you're doing with PILs is a great thing. What you're doing, if you can defend victims of unjust cases who can't afford their own defense, please do it. Those are all very important things. At the end of the day, our contribution has also got to be to bring people to power who are able to resist this kind of tendency. That's where I know a lot of professionals have expressed frustration, people they voted for on the ticket of Congress or Congress allies, having then defected to the BJP and so on, has been a source of great frustration for people. I understand that. But that is also part of the nature of what's happening in the country, that you're seeing a sort of political force that's sucking up all sorts of other elements that traditionally were not associated with them. And I feel strongly too that if we can do our work better, we could be able to raise consciousness of what's the right thing to do. I'll ask my colleagues if they'd like to add to that. That's just a personal view. Salman? No, I just
one thing that I really feel we need to do more of is to stand together. I think you asked a question about networking, and I don't think you got a response. And I think That's true. We need to create more networking opportunities within AIPC that would actually tell us that, just a few seconds back, there was a round of applause when we were talking about how we need to stand against these kinds of hate ideologies and right-wing extremism. That just tells you that we're all concerned. What happens, the way they win is when we think we are alone. Let's not do anything, we're alone. They're more, we're alone. Meanwhile, they still have not touched that 50% mark in national kind of elections so far. That means there are more Indians who still, after all this media, after all this money, after all these WhatsApp forwards, they still have not been able to get the majority of the country to their side, right? Despite everything. And we in the Congress, we have no resources. Our party organization is in disarray. Let's be honest about it. Even then, look at you. You're here. All of you are here. Despite all the difficulties, all the challenges, I think what we really need is to stand together, and be a force and show people. Because the more we are together, the more people see us, the more we express our views, others will get encouraged. I was telling Dr. Rajan today, I said it is very good. In fact, in the last year or two, I've noticed Dr. Rajan, Kaushik Basu, who's another eminent economist, they've been very vocal about this issue of majoritarianism and how that can hurt India. Okay? Now, these people have basically left all pretensions of how much they kind of oppose the current government or this ideology. That gives encouragement to people like me. I can be, that gives encouragement to other people. Similarly, if you take a stand in your own life, that'll encourage somebody else. And that majority that is still not with the BJP will grow, I'm pretty sure. But we need to create some networking platforms in AI. Well, on the networking, Salman, one of the ideas that occurred to me, and we never had a chance to implement it with COVID going on for the last 2.5 years, is that just as we are having our first national conclave now, we could encourage each of our coordinators to do a regional conclave, and possibly our state presidents could think of doing state-level conclaves, get all your fellows together. We also had, and I should say this to Sangeeta of Tamil Nadu, we also really made an effort to have an interactive website. There were some technical flaws, but we also found no one was using it to give their comments and feedback. Then we tried to create verticals, sort of vertical chat rooms, so all the doctors could chat with each other, all the lawyers could chat with each other, all the finance professionals, irrespective of which chapter they belong to. Even that we found participation rather weak. So ultimately there's an old English cliche, you can take the horse to water, but you can't make it drink. If you all want to network, you also have to make an effort. Now, Alim has come up with the idea that maybe we should do this through WhatsApp groups instead. Create a WhatsApp group of all the doctors in AIPC. Create a WhatsApp group of all the lawyers in AIPC. And then you all talk to each other. And then certainly the coordinator of that group could perhaps give any valuable ideas or proposals out to the national executive, and we could see whether we can take those forward. These are all ideas we can pursue. And now that life is coming slightly more back to normal post-COVID, we can pursue each of these ideas. First and foremost, I'm very glad, Vandana, you actually ended up joining AIPC. So thank you for taking my advice. Yes, thank you. Suresh, please come on stage. Yeah, the website needs some updating. We'll ask our web developer to come and have a chat with you. Okay, at the end of the day. So what we will do is we will postpone the next session to tomorrow, which is of the state presidents, because we will postpone the session of presidents to tomorrow so that we can actually give proper time for that. What we will do is we will take another 15 more minutes. I had a lot of questions. I don't want anyone to feel like we're not hearing you out. We will take more questions, but my request to you colleagues, please, there are many people, please make your questions brief, and to the national executive, we have to take as many questions. So, Ansari Saab, first 1 second. Ansari Saab, you have a question? After you, we will take the question from our colleague from Gujarat, who's also come from there.
Then we will come here. There are two gentlemen who've got their questions. Then we'll come here and we'll go back there. We've got 15 minutes. We'll ask you questions. Please, sir. Thank you very much. I'm Dr. Anis Ansari, Chairman, Ex-Officers Organization, UP Congress Committee, Uttar Pradesh. Sir, I'm submitting my plea to Dr. Shashi Tharoor, not because he's the chairman of AIPC, but also because he's a very popular and grounded politician across the parties. Thank you. My question is one of the simplest ones. In your eyes, sir, what are the 3 or 4 major steps that Indian National Congress should take to defeat BJP in 2024? Well, I personally believe that these have been staring us in the face for some time. Strengthen the organization, particularly the grassroots portions. I mean, I'm told there are many, many districts where the Congress has pretty much disappeared from existence. That was never the case before. We need to revive them, find people, give them opportunities and work. Secondly, we do need, I think, to keep the party active between elections. So it's not only an election fighting machine. In between, it should genuinely be a social service organization. It should go out amongst the people of its area, see what help it can do. Obviously, in times of distress like COVID, there's a big challenge. Other kinds of things we can do. Third, of course, we do have to get our message out. What do we stand for? Whether it's through writing articles, making speeches, writing books, which some of us can do, or just going out and making speeches, having family get-togethers and gatherings where you can communicate, take questions. There needs to be much more grassroots contact getting our ideology out. And finally, I think there has to be some freshness and renewal in the party leadership at all levels. We need new blood, we need fresh blood, we need people with time, commitment, involvement. We need some fresh faces. We need to have that sense of renewal to keep the blood flowing in the party. So those would be my top 4 things. So, sir from Gujarat. Good evening, sir. Myself, Dr. Nidat Barot, I am President of Gujarat, just recently appointed before a few days. Sir, instead of question, I would like to have interaction of the point that as we are a professional Congress, there are many professional agencies. For example, Bar Council, for example, Medical Council, for example, Pharmacy Council, Engineering Council, and lot more. There are issues of some professionals pending with the councils. Is it possible for us to go and interact with the council people stating that we as a professional Congress are here for Chartered Accountant, Council, to Bar Council for their issues? That will create a big impact among the professionals who are working in the field. Absolutely. You're supposed to be doing that. We encourage you to do that. In fact, I mentioned this Hello Doctor initiative, the online 24/7 helpline. That was done with the Medical Association, Indian Medical Association, which is the premier organization in the country of our doctors. You can certainly do that with chartered accountants. You can. I have addressed Uwais Ali Khan, was sitting there. He had got me to address the Chartered Accountants Association of India in Delhi when they met there. So you can do these different things. These existing civil society organizations could be very useful because also when you get your message out there, the same members of those organizations might want to join you at AIPC as well. So please continue that, Neeraj. I welcome that initiative. I might like to add that because of the work we had done during COVID, and Dr. Geeta Reddy's work, and Dr. Shravan Reddy's work here, and so many others, Dr. Jailal, who was the president of IMA, as soon as he retired, took membership of AIPC, and he's a national medical coordinator, not someone who's been out of things. The day, Doctors' Day, peak COVID, whole country's in lockdown, Doctors' Day customarily, Prime Minister of India and the IMA president do interactive session. You remember that, Chairman? 5 minutes later, President IMA is doing an interactive session with Dr. Shashi Tharoor because they were that grateful for the work that AIPC and the Congress Party did for doctors. 2 questions, gentlemen here, and then the one gentleman in the back. Yeah, go ahead, sir. Yeah, hi. Myself, Dinesh here, representing from Tamil Nadu AIPC. And good evening to one and all, everyone here, and honorable chairpersons. And this is not a question, that's just an interaction, like, how the politics is happening in India. Like, there is a variation between the northern side of politics and the southern side of politics. And we could see the students' politics and the youth politics is like very aggressive and active in the northern side, but comparatively to the southern side, like it's very sluggish or not active, to be honest. And how as an AIPC we can get all those student wings or the the schools or the students colleges, like we can get on to those
a level of people or the first time voters or the second time voters to get into these wings. And one more thing is like, as we are into more of media is like one of the powerful tool now here or across the globe for any kind of politics here. But when it comes to the Tamil Nadu or the Congress, compared to the other parties, like what I feel is like, the Congress IT wing or the media participation like is very less or slugging, to be honest. And comparatively, we are not able to give the right level of counters or justification for whatever the allegations or whatever the the cooked up stories by the BJP. So how are we going to overcome all those things? And what is the steps that we are going to take it forward here for the first time voters and the second time voters? Well, on And- student politics, definitely nothing stopping you from interacting. Again, it varies from state to state. So even in the south, Kerala has a very active and thriving set of student groups on all parties. So there's the SFI, there's the ISF, there's the NSUI, the KSU as it's called, etc. And they're very active, and some of them can indeed feed into our work. But in Tamil Nadu, if that is not the case, by all means, you can reach out from your chapter, whichever one it is in Tamil Nadu, you can reach out to the people in your area, in universities and colleges, and say, come and attend our sessions, have a discussion on a particular burning issue that you are hosting as an AIPC discussion, but invite the students. They may come, you may well find potential material there, no problem. On the, what was the second part of your question? Forgive me, Dinesh. It was about media. I must say that there have been various opinions expressed over the years, and attempts were genuinely made by the party to improve their media performance. I believe I've seen some fairly positive changes. First of all, there was a sea change between the pre-2014 Congress media handling, which was appalling, and the post-2014. I think earlier there was this attitude that we were in power, we should keep media at a safe arm's length, and there was an unwillingness to engage the media. In fact, I was criticized a lot for my openness and my tweeting and all that. And then they realized that that was actually what was required, because the BJP did all that and won. So after 2014, there was already one major change when the Congress became much more media friendly and paid more attention to it. And recently, as you know, just this year, there's been a new change. A new communications team has been appointed, and they're trying to be very active. So I hope you'll find an improvement. Part of the problem may be that it's not equally distributed in all the languages. So in English and Hindi, which is what they do out of the Delhi headquarters, they've become very energetic and very prolific, especially on social media, but not only press conferences, everything. But when it comes to, for example, whether Tamil has good AIPC, AICC messaging, or whether Gujarati has good messaging, I don't know. And frankly, I'm not sure headquarters knows either. A lot of this requires people with initiative in these states taking the national messaging and putting it in their own language. And that is something that perhaps we need to get better at. Because certainly the BJP does that, and they do it very well. How many more questions and comments? Quite a few. Wow, it just tells you, there's a lot of pent-up energy, and people still, despite being here for hours and hours. Yeah, it's 6:26. Wow, congratulations. So go ahead, sir. Yeah. Hello. 1 second. If we can have you ask your question, then the gentleman here in the blazer, then Sujata ji. We'll take 3 in one shot, and then we'll go to the next 3. Then we'll come to you, sir. Go ahead. Hello, myself Kanhaiya Chandrasekhar Pandey. I am from Bokaro Steel City, Jharkhand. First of all, I would like to Johar. I would like to ask a very important question from AIPC Jharkhand. Sir, you all people know that before 2 years, people were losing their lives due to lack of hospital beds. People were losing their lives due to lack of oxygen cylinder, important medication like remdesivir. And just after 2 years, आज हम हॉस्पिटल बेड के लिए नहीं बल्कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। महोदय शशि थरूर सर जी, मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना है कि जो इस देश में सबसे बेहतर चिकित्सा को पाते हैं वो सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं। मैंने बहुत पहले भी ये सवाल को उठाया है कि सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं। सीजीएचएस के अंतर्गत 1300 लोग हैं, जिसके लिए भारत सरकार 38.5 लाख लोग हैं, जिसके लिए भारत सरकार 1300 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर हम पूरे साल में देखें
तो लगभग 3,376 रुपए होती है और महीना में 281 रुपए। तो क्या हम प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 281 रुपए खर्चा करके उन्हें सीजीएचएस के तरह से हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं? मेरा ये सवाल है सर। Thank you. Can I request the gentleman in the blazer? Yeah. Your question, please. Good evening. I'm Nitin Rathi from Haryana. I'm a practicing lawyer in Punjab and Speakers, Haryana High Court. speakers, sound. Speaker ठीक से नहीं चल रहा है. Go ahead. Hi, good evening. You got my name. Go ahead. Yeah, my question is, after 2014, every group and every gathering is now a debate in a sense. Like wherever we sit with friends, with family, with co-workers, we have to debate and ultimately it gets to politics. So all of us, I hope I'm speaking for everyone, all of us is already a spokesperson. But many times we don't know what the message we have to put forward. So I mean, it may be above my pay grade, but it's my suggestion that, like Mr. Salman said, don't spread propaganda, but market. So I need the material and it needs Zaria to trickle down to me somehow, like hierarchically. Can I ask you to pass the mic? Yeah. So you're talking about spokespersons. Here's one of the strongest ones we've worked with from Uttarakhand. Go ahead. Thank you so much. Good evening, Dr. Tharoor, and good evening to everybody else. मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगी. बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी. हमें डाउट है कि हमें क्या करना चाहिए. मैं अध्यापिका भी हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ. सोशल एक्टिविज्म का कीड़ा जो होता है वो ऐसा होता है कि आप बस लोगों से बातें करते रहते हैं. तो आप एक तरफ नहीं देखते, आप दूसरी तरफ देखते हैं. तो आप सबको भी मैं ये सजेशन दूंगी और ये बताना चाहूंगी जो बात अभी आलिम जी बता रहे थे. He was talking about the manifesto and I want you all to know this, that manifesto पूरा तैयार हो गया, उसके सारे suggestions आ गए. एक दिन इनका फोन मुझे आता है कि सुजाता जी आप तैयार रखिए अपने सारे पॉइंट्स जो मैनिफेस्टो में जाएंगे. और मैं आपको बता रही हूँ ऐसा मैनिफेस्टो हिंदुस्तान में पहली बार बना जिसमें पर्यावरण को रखा गया. सोचिए जरा, पोल्यूशन, एनवायरमेंट किसी मैनिफेस्टो में आज तक नहीं आया. उसके लिए मैं पूरी तरीके से आलिम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सलमान सोज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, डॉक्टर थरूर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जरिता जी को. जरिता जी, मैं ये जानबूझ के ये बातें बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत सवाल आए हैं. नेटवर्किंग की बात आपने करी. एक दिन एक मैसेज देखा रात के समय मैंने जरिता जी का. उन्होंने लिखा था त्रिपुरा में मार काट मची हुई है, इसके लिए बात को फैलाओ. एंड यू नो, आई जस्ट आस्क्ड हर व्हाट इज इट एंड शी सेड मेक अ वीडियो इन बंगाली. मेरी बंगाली बहुत खराब है, but I made it and it did reach certain people. So that is networking. But in addition to that, what I can see is that a lot of people have a lot of pent up energy and they are right. They need to know what is it that they go out in the public and tell people about our programs or how to explain to them when it comes to religion or nationalism. This is what probably a lot of people want to know. So in addition to saying that you be on the ground, as an activist, I always am there fighting it out. अगर कहीं पे बच्चों को मारा जा रहा है तो और उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं वहां मौजूद रहूंगी. मुझे नहीं देखना कि क्या हो रहा है. जेल में तो डालेंगे, क्या कर लेंगे, किस जुर्म में डालेंगे, ये वो बच्चा नहीं जानता जो प्रोटेस्ट कर रहा है. लेकिन आप और मैं इस बात को जानते हैं कि हमारा जब तक जुर्म नहीं होगा हमें वो जेल में नहीं डाल सकते. So we've got to use our power for that. And I thank AIPC for giving us that opportunity. Thank you so much. Thank you. Chairman, you want to respond to those points? No, I think that's fine. I think sometimes it's best that what they say should just be applauded and echoed. Can we get the mic? I think there was a question that I didn't answer earlier, but There's, yeah, so one to Aditya and then to Gehlot sir. Either one, fine. Please introduce yourself. मेरा नाम आदित्य विक्रम है और मैं स्टेट प्रेसिडेंट AIPC झारखंड से आता हूं. मैं शुरुआत किया यूथ कांग्रेस से, जिला कांग्रेस से, PCC सेक्रेटरी भी हुआ और विद द ग्रेस ऑफ जरीता जी एंड डॉक्टर शशि थरूर आई वाज अपॉइंटेड द AIPC स्टेट प्रेसिडेंट. मेरा सवाल एक ही है सर. अल्टीमेटली जैसे रुक्मणी जी ने कहा, हम सब एक ही टारगेट के लिए जमीनी तौर पे लगे हुए रहते हैं, महीनों भर, सालों भर लगे रहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है. तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि AIPC
एग्जीक्यूटिव जो दिल्ली में है हमें मजबूती से सपोर्ट करे, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो AIPC हो चाहे OBC हो, पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी हमारी पार्टी है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही है। मुझे एक और बात कहना है, क्या हम स्टेट में इंटरैक्टिव सेशन स्टेट वाइज हम लोग रख सकते हैं? और मोर अगर चुनाव लड़ना है तो जमीनी तौर पे उतरना पड़ेगा प्रोफेशनल कांग्रेस को भी, तो हमें बूथ स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम करना चाहिए, कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं? ये आप मार्गदर्शन कृपया हमें दीजिए, ताकि आने वाले समय में मजबूती से हम चुनाव भी लड़ सके और अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Gelot sir. Good evening, sir. Most of the things I wanted to say have been covered by some of my friends, but then I would like to add certain things to what I wanted. First on networking, and as rightly said, how many people use website which has been. Sir, with all humbleness, because that being a little bit of my subject as well, I'll say that our website and our entire networking thing, and I'm specifically talking of the electronic networking, which is very fast and reachable to every corner of the country in no time. That can really be made very, very strong, and it's not being used because it's not strong. It's not being used because it's not strong enough, and the way it can be handled, it is not being handled. So I don't want to criticize anyone on this, but we really need to work in this direction. It's a very, I'll say, it's a very normal kind of a job, and I have many examples which can be. And I've We'd be offered grateful my if you'd speak to a web developer. Can I make a suggestion, sir? We have a lot of tech talent in the ranks. Can we form a small technical advisory committee whose job is to just keep the website, and you can help us as well? You can help, or you can augment some of the work we do. We can give you some of the responsibility. I'm thankful to Alim. He's always been taking my suggestions. I keep giving him a feedback. See, that way for this. we have some way of yes providing a remedy. But Not- still, I'm not. We Thank are not yet satisfied. Anyway, coming to my next suggestion, sir. My next suggestion. Also, we have tea and coffee for you as well as soon as this is done. It's there outside. Please don't. Thank you. Go ahead. Sir, I also agree with Salman So sir about the academy, the training academy, but I wanted to suggest that this could be a little extension and more interactive with the district Congress committees at the chapter level, that training cells in every chapter be made. Of course, once trained by the Central Training Academy, it could percolate down. If you could prepare a roadmap right now, maybe 5 years down the line will be AIPC fellows would really be training. Not only, sir, we don't talk about the entire thing starts with ground level, and I say Nagar Parishad ke chunav. I'll say choti nagar panchayaton ke chunav, and all those people who get elected do not actually are trained, and they do not really know. Once a person becomes a councillor, he does not know कि वो करना क्या है उसको. And I think AIPC is one platform which can provide them that kind of an assistance, and that is how firstly we can become their advisors, then probably we start teaching them, and then we are one of them, and that is how the importance of AIPC over time will build up with the main Congress stream. And that can be a long-term strategy for AIPC to follow. Thank you. Can we get this mic? Sir, just one small suggestion. Just one small suggestion, sir. About the membership, I'll say the first 2 or 3 years are supposed to be dedicated to building up the organization across the country. Unfortunately, because of COVID, we've not been able to do so. But I think we should dedicate first, now probably next 6 months, that we have a AIPC chapter in every district of the country, or maybe every MP constituency of the country. Every Lok Sabha constituency. Every Lok Sabha constituency of the country. And once that happens and our networking is very strong,
the exchange of ideas would be very simple, and we'll all love to be together physically once in a year, whatever it is. Thank you. Gentlemen there. I and think then that's my- a very good my challenge colleague we there. should give to all our state presidents. Those who don't have a chapter in every Lok Sabha constituency, they should come back to us with their plan to do that. So, Hello, Ali. Jharkhand and Go ahead. Chhattisgarh are nearly complete. Kerala Hello, also everyone. Very good evening. This is Karthik Reddy from Telangana. I'm recently appointed as Secunderabad chapter president. First of all, I would like to thank the AIPC Chhattisgarh team for organizing this wonderful event, and also to our leader Rahul Gandhi ji for his brainchild initiative, and our chairman Shashi Tharoor ji, and our South Regional Coordinator Geeta Reddy Garu. Yeah, sir. My question to you is, what is our stance on the reservations? I mean, I know it's a sensitive topic, but what is our stance on reservations in the public sector? Because as you said, as you have been interacting with Raghuram Rajan sir, that highly qualified educationalists are applying to a lower jobs, because it is harm to our country. So there is a saying also, I mean, intellectual silence is harm to our country. So what is our stance on it, sir? And also, I would like to cite an example, sir. I mean, on Nirbhaya incident, which shook the entire world in Delhi, 2012, our leader Rahul Gandhi ji nurtured Nirbhaya's brother and made him a pilot, because he knows how he's an educated professional, highly qualified. And when compared to our present PM Modi ji, when asked about the unemployment, he answered saying that, see, outside this office, outside this auditorium, those the guy who is selling the michi bhaji or pakoda, is that not employment? So this is the difference, sir. So I just want to, I mean, ask you this question. Thanking you. Thank you. Thank you. Can we take the point from? Alim, I think we've lost control of the. Yes. Unless we answer some of these questions, we'll never remember them. I'm Sure, sorry. go ahead. So this is the. So we'll do this, and we'll do one last round of questions. So after let me answer this one, and Salman will answer Aditya's, and I was hoping Rajiv would answer the other one that came. But anyway, whatever else, some of you may have to remind us, there were too many questions without answers to keep straight. And I should also say something briefly about the media thing. I think that's an excellent suggestion. We'll convey to Jairam Ramesh, the new media in charge, that the party line that is announced every day in the press conference by the Congress should be put up on the AICC website. And we would in turn have, Alim will have the responsibility of ensuring that all of you have a link to that website, so that anybody who actually wants to know what the party stand is will have a way of getting it. And ideally, Alim, it should be searchable, so that people, if they want to know what's the policy on Jharkhand or whatever, they can do a search for Jharkhand and find all the statements made on Jharkhand. So that, I think, is really worthwhile. We'll convey it to the media department, and Alim will make sure you have the link. But I do want to say that one very important insight you offered is, even when you're discussing with your family, you want to know what the parties, but that's excellent. When I used to head the communications for the United Nations, I would say to people, we would meet every morning, decide the party line on a number of big issues, and then I would send it to every UN office around the world, because I said, even the fellow in Beijing attending a cocktail party should know what the line is on this issue, and not only somebody addressing the media in New York. And that's exactly the right message. We should all be aware, and we should be able to speak up. So we'll get that out there. Thank you. Sorry, the question you wanted me to answer, Salman, was the, what was it? There are too many questions, one after the other. This was the question from reservations. Reservations. So reservations, I'll tell you, I understand your concern, and I've also had it from when I've addressed the NSUI, some student or the other always stands up and asks about this. The sad truth, let me put very bluntly, is that reservations were created as a response to millennia of discrimination. And now it's reached a stage that it's become what is called the third rail of politics. You know, in the metro system, there are two rails on which the wheels run, and in between there is a third rail on which the electricity runs.
And if you touch the third rail, you're electrocuted. Now, in politics also, there are some subjects that are like the third rail. If you touch it, you're fried. It doesn't matter what the logical arguments might be and so on. So I must say that at the moment, the position of all political parties is don't touch reservations. It is also true that when Ambedkar ji first wrote it into the constitution, reservations in that stage only for scheduled castes and tribes, it was meant for 10 years, and thereafter it's been extended indefinitely. When it came to the Mandal reservations, which took the total up to almost half, there was no time limit given, and that too now is untouchable indefinitely. So you must understand that it's part of Indian society paying back for past wrongs. I understand the result is that many feel aggrieved that people who are in the general category but have higher marks tend to lose out to people from other categories. That is part of the system, and we'll just have to live with it for the foreseeable future. There was an interesting Supreme Court judgment in 2015 on the Jat reservation case, in which Justices Nariman and Gogoi went on to become Chief Justice later, wrote an amazing judgment saying that they will no longer consider reservations based on birth alone, that is on caste alone, that they wanted the